I am Puneet Khurana with my very good friend Manish Thawan, and together we bring you Stoic Podcast Series. This series is started as an initiative by StoicInvesting.com to bring the best minds of investing to teach their wisdom, irrespective of their investment style or philosophy. Learn the various viewpoints, choose the nuggets, and then develop or enhance your own investing style. Welcome everyone. Today's podcast is an extremely special one for me. We have with us a very unique and amazing individual who is widely respected in the Mumbai investment circles, but you will hardly ever hear him in media and popular channels. Well, I met Divyesh Bhai in one of the investment forums, and what struck me immediately was a man with extreme convictions, backed by tremendous understanding, and that very moment I knew that I have to know this man very well. Well, this podcast series gave me an excuse to do just that, but I wasn't aware what was in store for me. It was a huge surprise when I took this podcast. No more disclosure from my side. Listen to this amazing conversation, and I invite you all to enjoy this beautiful journey of his life. With me today is also Nuresh. Nuresh is a very close friend. He's a renowned technical analyst, and today he is also my co-host in this podcast. Over to Nuresh for a few words of introduction, and then we'll hear from Divyesh Bhai himself. Let us start with a small introduction on Divyesh Bhai of what I know about Divyesh Bhai. So I met him 3-4 years back. So I've met a lot of investors, those who are not candid. So they'll always only talk about what they've done right, and as well as never disclose candidly that this is something happened in my life which was bad, or this was good, or this is my view. So I've known Divyesh Bhai to be very clear cut about his views. This is my view on the markets. If it is negative, be it negative. If it is positive, be it positive. And explains in terms of what is reality. So there are people those who have invested in the markets, reading books, and here is a person who is a book in himself. So every time I've been to, or anyone has gone to a conference or say companies, you may end up seeing Divyesh Bhai over there. So rather than me giving an introduction, I think he's the best guy to tell himself, as in explain himself. Great. So Divyesh Bhai, welcome. Thank you. It's a pleasure to have you on the podcast. Nuresh is always praised for you, and I have always wanted to come to Bombay and take this podcast. So I'm very, very lucky that we got this opportunity with you. Yeah. So let's start with, how did you start in this industry? Where do you come from? What has been your background? And Basically, as far as my education is concerned, let me confess, I am a non-graduate. okay, So this might looks very surprising to all the people, but to be very frank, I am a non-graduate. I have not cleared my BSc. okay, But I was very much interested in economics and statistics. When I took my BSc, I took a special subject, statistics and economics as my special subject, which is very rare in BSc. It was in 77, 78. As a eldest son of my parent, I went to my father's business of broking in iron and steel business. My father was doing very well. We are 3 brothers, I being the eldest. So naturally, after dropping out of education, I was very much interested to go to my father's business. So I went to my father's business as a broker. okay, And we were doing very well. I went with my father at a place called Daru Khana, Railroad at Bombay, okay, where we had a wholesale brokerage business of steel. I had one advantage because I stayed in Ghatkopar, and Tata Steel yard was in near Vijayawada, just 1 kilometer from my residence. Tata Steel as well as Shell Steel yard was near my residence. okay, And we were doing brokerage of all defective items of Tata Steels, wagon load defective items. okay, So in that, every day we have to go to the yard and see the material, and we have to judge the price. And we have to tell buyer and seller that this is the defect of the material and this is the price. One of the best principle my father taught me is that as far as brokerage is concerned, you have to be the most success lesson for a brokerage is you have to be very honest. okay, Because I know buyer and I know seller also. So I take brokerage from my seller side.
and I give material to the large traders in Darukhana. And I know where traders is going to sell that material. Okay. So I know their margin of profit also, but I never looked at their margin of profit. Otherwise, I will lose my prestige. So my father's prestige was very high in steel market. Okay. At that time, we were just struggling and just going through wood patches for my father and everything. But by heart, my heart was with stock market, equities. It was a passion for me to be in equities. This was from college time? Just after the college. Just after the college. Okay. So at that time, I used to read about new issue forms. Nowadays we have got red herring prospectus. At that time we don't have a red herring prospectus. Okay. You get full form, and back of the form they write all the histories of what company is doing, what are they planning, what equity they plan to raise. So I used to read all types of form. If I remember well, at that time I used to preserve all the forms of the company that came during that period. Okay. I had a full box files, 2-3 box files of all the forms, and that was the data which was authentic data available in the market. You don't get any prospectus or there was no computer. You don't get anything on computer. I think after some times I felt that being a one man, I cannot handle both the business, my brokerage business in steel as well as my equities. And at that time what happened, the steel yard which was near my house was shifted to New Bombay, Kalamboli. Tata Steel as well as Shell Steel Yard was shifted to Kalamboli, which was very far from here. Okay. So it was about 1.5 hours from here. So, and my business was purely on inspection of the material. Without inspecting, I cannot do my brokerage. Right. So as soon as wagon arrives in the yard, I have to go, I have to check the all plates, blooms, billets, what are the size, what are the content, how it is, what are the defects. And then I have to tell to the buyers as well as sellers that this is the type of material. And they all trust me and I do my sodas. But when the yard shifted to Kalamboli, so it has become very difficult practically to go to Kalamboli. So I slightly lost my interest in steel market. And one thing at that time I realized that if you want to make money, big money, I think brokerage is not the right source where you can make big money because there are limitations. You can earn enough for your survival, but you cannot build wealth, so-called wealth. Right. It was enough for my survival, for my family survival. Suppose my expenditure was 10,000, we are getting 15,000, 20,000, but that is all enough. But I thought, boss, this is not enough. I want to build wealth. And in the brokerage, what was the negative is that in a year you do 10 sodas with party X, and at the end of every Diwali we used to have an account off. And suppose in one of the accounts something goes wrong, they try to cut off my all the brokerages. So it hurt me. Okay. So in spite of giving all the honesty, all the services, Right. I am not sure about whether I will, end of the day, I will get my brokerage or not. Right. So I thought, okay, I am depending on somebody. So I don't wanted that type of thing. Sure. I don't want somebody will dictate my fortune. Sure. So I decided that I have to live either broking or equities. Okay. But see, at that time, I was not earning anything in equities. I was earning only from broking. But my long-term vision was to create a wealth. So I decided that though now brokerage is giving me money for the survival, I will not do that. And I took a hard decision to leave steel market, and I concentrate only on equities. Which year was this? It must be around 82, 83, 79, 80, 82. So 3-4 years after your graduation, when you Getting into the business. I went to the business, then I left steel market around 87, 88, 89. Achha, okay.
And then you shifted to equities completely. I shifted to equities. So how was your start? Were you guided by somebody, or you just jumped into equities? What was your source of that finding as to what suits me, what kind of investor I am? See, at that time I learned the whole success of all blue chips of equities, how wealth was created at that time SEC, Hindustan Lever, all stories. Right. What was the price 10 years back? What is their price now? Right. So I was attracted towards equity. That this is the place where your at least wealth is here. Whether you can make it or not, it is up to your destiny and your efforts. Okay. So one thing was very certain, that I am in a wealthy market. What was my comparison was between either steel market and equity market. Right. In steel market, I saw that traders were not earning that much. Right. So if they don't earn, I will not get my brokerage. So the future of steel market looks very dark. Okay. So I thought it is not worth spending my life on steel market. Sure. So I left once for all. I told my father that I am leaving steel market. Right. You do, if you want to do, you do steel market, whatever you possible within your capacity. Right. I will not be helping in that. Okay. And I will be concentrating on equities. So how were your first 2-3 years, the major learning phase? Can you describe that for us? First 2-3 years, first 20 years was miserable. It was absolutely miserable. Okay. Because my whole family was against me. Okay. My father had a perception that it is a satta bazaar. Right. उधर जाके आपको कुछ मिलेगा नहीं. It will be all loss. One day you will be at top and someday you will be at the bottom. Okay. And my father traditionally had a very bad image of stock market. कि ये सट्टा बाजार है. Right. It is just like a gambling place. So 20 years later also it has not changed. 20 years later it will never, or 20 years hence it will not change also. Okay. I think at this time I can say it is not the market is bad or market is the spoil game. Right. The way in which you play the game is the wrong. Right. Market is always right. But the way in which we play or traders play the game is wrong. Right. So, and at that time I had a ambitious of, I was fond of doing multibaggers, founding a multibagger. That was my biggest dream. I want to found some multibaggers. Okay. So I always from that time only, and one of the pre-assumption for me is that those stocks which are in limelight cannot be a multibagger in future. Right. So it can be some new stocks, new segment, hidden gems. Somewhere down the line, you have to find it. But this is from the very starting, or you Very changed it? starting. From the very starting, you were very clear. that you are not I was going- very clear, Okay. and I was very clear that I will not follow anybody. Okay. I will learn from all the people Okay. who are successful, Okay. but I will not follow anybody. So who are those few people initially who helped I you think- learn, directly or indirectly? किसी का you must have read some things, or somebody guided you. See, at that time also Rakesh Junjunwala name was there, Nimisha name was there, and many prominent names were there. Right. And all blue chip stocks were discussed at that time. Right. But at that time, my thinking was that instead of looking at success, I was looking at from where they began their journey. Okay. So I want to find out similar type of stocks in another segment where it is not found out by any stalwarts of Right. stock market. Right. So you said the first 20 years were bad for you. Yeah. So what were you doing wrong? Since you were very clear from the starting that you have to find those companies which are in the multi-bagger starting phase, what is it that you are doing wrong which made your starting to be very bad, in your words? See, to be very frank, the way I was working at that time and where I am working today, I think my quality of my work is the same, but only the difference I can say is my destiny. At that time, at that 20 years, luck was not favoring to me. Okay. That is what I can say now. Okay. And for any successful investor and to create a wealth, I think
there may be many ingredients, but one of the most powerful ingredient is ultimately it is your luck, destiny. If it doesn't favors you, you are a failure. Your system may be right, your thinking may be right, everything may be right, but ultimately the last point of success is your destiny. And destiny is such that you have to always depend on destiny. You have to try hard. We never know when the luck will change. And the same thing has happened in my life also. Okay. It changed around 2003-4 onwards. Okay. So what happened in 2003? So how were your first 10 years, 1990 to 2000? So what did you do in that period? One of the things which I never forget is around 96, 97, 98. My son was about 10 years. I was in equities without success. So all my, whatever my saving were all spent in daily expenditures. I didn't have at least 2000 rupees in my cupboard at that time. And it was only my wife who supported me. And we had a very miserable life at that time. Because all my family was, my brother was against me, my father, mother, everything were against me. But I was firm in my decision that I will be in equity market only. I will tell you one of the incidents that at that time I was living in nearby society called Vasundhara, where we had a very good campus, and it is very difficult to get very good campus in this locality. Right. Since my only son was 10 years, and his friends were all going in the evening, they had all bicycles. So naturally he will feel for a bicycle. So my son asked to his mother that I want a bicycle because my 4 or 5 friends here are having a bicycle. But at that time to buy a bicycle was really not possible for me. But being a only son, I thought let us have a bicycle. So I went to the shops and inquired about what is the cost of that bicycle. And that time the cost came out to be 1600 rupees. And you believe it or not, I have to plan out my 1600 rupees. From that day onwards, my wife started saving 10 rupees, 20 rupees. And we don't went to any hotels for 3 years. We didn't went to any drama or any entertainment. Only thing was we want to save 1600 rupees to get first bicycle for my son. And I got the first bicycle after 18 months. Okay. Thereafter I gave my first bicycle to my son Ujit. But Divyesh, going through such a bad phase, Yeah. didn't you ever think in yaar equities mein nahi ho raha hai, you know? Yeah. Those doubts never creeped in. Yeah, that doubts comes to me. Everybody told me, "Bhaiya equity mein nahi hai, so you change some line, Right. you go to some other lines." Right. Even once I went to my friend and he was doing very well in the garment industries, in ladies garment, and I went for there as a job to my friend, as a helper to my friend. Okay. So I had a salary of about 8 to 10,000 rupees at that time per month. Okay. But after 10-12 months, since my heart was with equity, I was not satisfied. The job satisfaction was not there. Right. So again I thought, no, I don't want to do this type of job. But it was only for the survival. Right. Then by 2000, I had one of my friend took me to his one friend, and I was employed there as a advisor. Okay. There, and there also I was getting about 2 lakh rupees per annum as a salary. This is in year 2000. This must be year 2002, around 2000. 2002. Yeah. But you are still investing in the markets. I was still investing. I was fully reading everything. Okay. My plus point was I read maximum of newspapers. Okay. I try to read maximum of newspaper till today. Okay. The only source of
information which I get is, I think, is the financial newspapers or any newspaper. Okay. So I try to read as many newspapers as possible. Then I have a habit of all cutting the newspapers, all the good articles. I used to cut and preserve all the articles. Okay. My friend all knows me very well that you are a very good in keeping all the good articles. Right. So I have a record. Most important thing for my success was I had a collection of annual reports. From that day onwards, right from 2099, 2000 onwards, I used to collect original annual reports because I thought that this is the only source of authentic information is given in annual reports. Right. So I don't believe in anybody who writes about annual report, but I only believed in annual report itself. Okay. So first annual reports and financial newspaper. These are the cheapest source of information which I was going to get. Right. And I have to extract and I have to apply my mind कि भैया ये होने वाला है, ये कंपनी अच्छा है कि नहीं है. Right. And I have studied all successful investors. What was the source of studying those people? Through या तो टीवी पे या तो न्यूज़पेपर पे या तो magazines पे. Okay. At that time, Capital Market was the best magazine available for equities. Right. Business India, Capital Market. Right. So I used to see. I cannot afford a new copy of Capital Market because I was struggling. Okay. So I used to get 30 rupees Capital Market at 5 rupees from the Radiwalas. Okay. I used to go to King Circle to get all the old newspaper, old magazines like Capital Market, Forbes, International Fortune. Right. There I was getting at 5 rupees, 10 rupees. Okay. So every month or every 2 months, I catch a bus from my house and go to King Circle. I spend 2 hours there with all Radiwalas. And from all hawkers, I used to get all magazines. But I used to read all international magazines at that time. Okay. Where I was getting one magazine, Fortune, internationally. And Fortune, I think in month of June, they always come out with Fortune 500 companies. Right. They have a special edition of Fortune 500 companies. Right. So I and my friend always try to discuss, भैया Fortune 500 में ये सब company है. Then we go for, they give the name of the company, then the market cap or the sales, and which segment they are. Oil and gas, retail, ये वगैरह वगैरह सब. So one of the thing at that time I found was that retailing was really key at that time. Walmart was at that time also very pioneer in retailing. Right. And in India we don't have any retailing at that time, Right. organized retailing, Right. what is now. So my initial pick was Pantaloon Fashion. Okay. At that time the name was Pantaloon Fashion. Right. I picked up around June 2000 if I remember right. At that time Pantaloon Fashion was quoting 13 rupees Okay. and it was come dividend, 1 rupee was dividend. Okay. So net price was 12 rupees. Okay. So I bought Pantaloon Fashion, and we all used to. I had a one office, my old residence where I stay opposite that. So we used to occupy that my residence as an office. So I used to keep all my annual reports, newspapers, cuttings. What I used to do, I used to cut all the newspapers. What are the interesting articles? I have a folder. Suppose I get anything about retailing, I have a one folder of retailing, one folder of auto ancillary, one folder of textile, one folder of other things. Right. I used to keep all the good interesting articles. Do you still keep them? I still keep. Okay. Yes. Okay. We'd love to see it. Yeah, Love to yeah. see it also. Okay. So June 2000, you bought the Pantaloon shares. Pantaloon 13 at 13 rupees. How much of your total savings or whatever you put in the equity you put into fashion, Pantaloon fashion? I don't remember exactly how much, but it must be about at least 20% of my. Yes, Yeah. I don't want the exact number, but Yeah, the idea yeah, was yeah, that you bought small quantities of a large number of shares.
there was no information available about retailing. Right. And I think the only competitor at that time was Shopper Shops. It has just emerged. Right. And we had a newspaper article that some private equities and they are investing in Shopper Shops. Right. But we were not knowing about their financials. So we came that अगर Shopper Shops में ये लोग इतना पैसा डाल रहे हैं और उसका वैल्यूएशन ये कर रहा है और अभी उसका तो प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस में है और here is a Pantaloon, तो उसका मुझे वैल्यूएशन was looking very attractive. Then we called Kishore Biyani and we had an appointment with Kishore Biyani. Okay. So we spent at least 3 hours with Kishore Biyani. We had a coffee with Kishore Biyani and he explained me everything. And his vision was to be absolutely what Walmart is doing. What organized retail was the first word which he explained me. This is what organized retailing is means. I think one of the interesting thing about Pantaloon is that when I was looking at Pantaloon, and at that time I don't have any money. Even मेरा खर्चा निकालने के लिए भी भारी था. Okay. So one day I told my wife, I will take you to the. At that time, Pantaloon first stop started at Crossroad 2 near Hirapanna. Okay. Near Hirapanna, Crossroad 2. Crossroad Crossroad 1. Okay. And nearby there was one shop called West Side. It was by train. Tata. First Same, stop. same. So that was the only organized retail. I told my wife कि भैया उधर we want to go there. मेरा wife laughed at me and मेरे को बोला पैसा नहीं है, खाली पीली जाके इज्जत का वो होएगा, अपने को कुछ लेना नहीं है. Right. But it was my passion and मैं बोला चलो इधर जा. मैं बोला देखो पैसा नहीं है अपने पास, अपने को एक पैसे का खरीदी करना नहीं है. That is 100% sure because Right. I did not afford. Right. I calculated कि इधर से जाने का बस में 2 आदमी का इतना पैसा होएगा, उधर से आने में इतना पैसा होएगा, उतना पैसा था हमारे पास. Right. मैं वाइफ को बोला अपने को कुछ नहीं करने का है, खाली we will go there and have a look at the stores. You have a look and you tell me frankly that by chance in future suppose you have a money in your pocket, whether you feel like buying from this type of stores or not. So she agreed. Okay, चलो. बोलता है जस्ट बिकॉज कि आपका इंटरेस्ट है इसके लिए मैं आती हूँ. बोलता है मेरे को शॉपिंग तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, यू कैन नॉट अफोर्ड. वैसा लेके उसके साथ मैं 3 घंटा उधर गया, वेस्ट साइड में भी गया एंड आई वेंट टू पेंटालून. उधर जाके वाइफ को सब, वाइफ वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड. बोलता है साला ऐसा तो अपन कभी सोचा नहीं था कि इतना क्वालिटीज इतनी रेंज का सब मिलेगा. बिकॉज एट दैट टाइम द रिटेलिंग कॉन्सेप्ट क्या था, आप शॉप में जाओ तो वो आपको यही पूछने वाला है पहले, वी विल टेल यू कि भाई व्हाट यू वांट, तो बोलेगा आई वांट शर्ट. देन सेकंड क्वेश्चन, यू वांट हाफ शर्ट, हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, यू वांट लाइनिंग, यू वांट चेक्स. तो अपने को पहले से डिटरमिन करने का जाने का है कि वी वांट चेक शर्ट्स विथ हाफ स्लीव्स. तो वही दिखाएगा व्हाट इज योर साइज. बोलता है 42, तो दे विल शो यू 42 3 pieces and you have to select. First time we saw such a large format of stores. Right. Where you can touch, you can feel and you can buy. Right. My wife got, नहीं उसका ओपिनियन ये आया एंड ऑफ द डे कि नहीं ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा है. अगर पैसा हुए तो यू डोंट हैव टू गो टू एनीवेयर एल्स, यू हैव टू ओनली गो टू दिस टाइप ऑफ स्टोर्स एंड बाय. Right. And second most important thing at that time, when any friend of mine who goes to Dubai or anywhere else, as and when they come to Bombay, the first thing they tell me that भैया उधर का शॉपिंग बहुत अच्छा है, शॉपिंग मॉल अच्छा है, उधर जाओ तो 10,000 फुट का स्टोर है, 50,000 फुट का स्टोर है, उधर जाओ ये है उधर वो है. अपना इंडिया में तो कुछ हिस्सा है ही नहीं. तो एट ए टाइम आई हैड ओपिनियन कि जो वर्ल्ड में जो है वो आज नहीं तो 10 साल के बाद इंडिया में आने वाला है. Right. टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू कैच अर्ली. सो वो एक कॉन्सेप्ट मैंने एक पकड़ लिया कि नहीं ये रिटेलिंग अगर सी. देन आई फाउंड आउट दैट विद इन टॉप 500 फॉर्च्यून 500 कंपनी देयर आर, out of top 100 companies there are 7 to 10 retailers. Walmart, Carrefour वगैरह उस टाइम था. Right. So one thing was very clear कि it was recognized by the world. Right. So what is true for the world can be true for the India. The only thing was that it is a matter of time. Right. It can be after 5 years, it can be after 10 years. Right. But the successful retailing model of the world
will be successful in India. Right. And who are the companies at that time? Only one company, Pantaloon Fashion, who was telling that they are going in a retailing. Right. I had interviewed with Kishore Vianney, Right. and he was also very damn sure that he want to go in the same way as organized retail. So वो बात एकदम नक्की हो गई थी कि वो ही जाने वाला है. Right. So I had a fortune in investing in Pantaloon Fashion at that time. Okay. वो मैंने अभी बेचा होएगा, you will not believe कि in spite of my struggling, 13 rupees fortune, 30 rupees Pantaloon, I must have sold around 2,500 rupees के आजू बाजू बेचा है. Right. Somewhere in 2005, 6, 7. Somewhere around 2003-4 के आजू बाजू शायद होएगा. अच्छा, हाँ बराबर. उसके बाद फिर कुछ एडजस्टमेंट हुआ था. And at that time, I think issue of Infosys came around 2000. Right. Infosys IPO, and there was a boom of all software companies. Right. So whole market was made after all IT stocks. Infosys came. 1994 था. 94 में आया था, मगर उसका जो बूम पीरियड चालू हुआ 1999 2000. 99-2000 में सॉफ्टवेयर बूम जो चालू हुआ, एवरी मास्टेक्स, विजुअल सॉफ्ट वगैरह सब 3 digit, 4 digit, 5 digit. At that time, since I had a habit of collecting all the new issue forms, Right. one company came with IPO was Software Solution Limited, SSI. Right. So it was a company for coaching classes of IT industries, Okay. just like what was NIT. Right. Since I have no IT background, Right. I read that back of the form. I read at least 100 times to understand each and every terminology. What this is this. And at that time here in Ghatkopar there were a class called Apple's का कुछ class चल रहा था. Apple. Apple का. Hmm. So one of my friends had a contact, the head of the Apple at Ghatkopar branch. Okay. So I took an appointment of him. I told him that I want to get some of your ideas about this company called SSI. He was not knowing SSI. Right. So I took the form with me Right. and I told him that you read this form and tell me whether they are in the right business or wrong. What they are doing is right or wrong. That man told me that see he is not from equity market, he cannot comment about the price. मैं बोला आप मेरे को stock price की बात मत भूल जाओ. You only speaks about what business ये कर रहा है वो सही है कि गलत है. Right. Whether he is ahead of the time और जो फालतू बात खाली for showmanship के लिए है. Right. Then he studied form fully और बाद में वो बोला कि नहीं बॉस ये जो कर रहा है वो this is a very high level thinking और top of the range सब कर रहा है. Right. This is what we are planning after 5 years. This is what they are doing, Software Solution is doing today. Today. So I was very much impressed with Software Solution. So I bought the software. I had a large quantity of Software Solution. Even I was the first person to attend their first AGM at Chennai. I had an appointment with Mr. Suresh of Software Solution. Right. And I attended the first AGM at Madras. He also gave me, after the meeting, he gave his car to me and to roam around and see all the education center in Chennai. Okay. And it was really true hospitality. This is 2000. 99. Around 2019. Around 2000. When software first issue came. Just to draw the parallel, this was still your struggling time going on. You Struggling still have no time, money, still struggling time. large amount of money. All or struggling anything. time. So you still haven't made large amount of money or anything. Not at all. Not Okay. just hand to mouth. Not even hand to mouth. Okay. Not even hand to mouth. Okay. I mean, let's say if I put myself into the situation, the biggest problem which I feel you must be facing, and I could be wrong, but the biggest problem is that you are looking for survival simultaneously. Yes, right? yes, yes. And when that is the case. Prime. Yes, reason Yeah. for being. But if that is the case, you held Pantaloon from 13 to 2500, 500, and so you never thought, "Kya okay, I may double my money. Let me take my money out." And still, since you are having problem, there was no other source of income. Never thought why? What makes you? stick I to was the convinced companies? with the story, and that was the only. Today I can tell you that was the plus point of my success, my conviction power. I never get out stock too early.
I never look at my cost price as my exit price. Okay. Whenever somebody exits from the stock, Okay. their thought comes is what is their cost price. Suppose your cost price is X, you will think now I have made 2X, Right. I have made 3X, it is time to exit. Right. But in my life I never think of my cost price. Suppose I purchase someone stocks at X Right. and it goes to 3X. I never think it is X is going to 3X. I always evaluate stock at 3X. Whether at 3X it is worth holding on or it is overpriced. Right. But whenever I went for pendulum, see, journey from 13 rupees to 2500 Right. must have lots of ups and downs. Right. Absolutely. Similarly, at that time when there was a boom of IT boom, I had one of my friend gave me a research report about all capex cycle going to come in India. Like Right. India was power starved nation. India has a lot of power deficiency. Right. And he made an excellent report about all power equipment company, power ancillary companies. Right. So at that time I picked Elecon Engineering, Okay. ELECON, Which Elecon year you Engineering. talking about? So in, This must be just to around pause, 2000. software solution, how did you then get in? Oh, yeah, could you right. get out in the whole Yeah, side? yeah. See, one of the biggest learning lesson from software solution is, and since I was in the stock market, there was each of speculating. I Right. was a value investor. Right. I always believed in investing, but since I was struggling, I was tilted towards speculation, which today I definitely say nobody should do that type of thing. And I had speculated in GNFC in a big way, just to make fortune. Because one thing is very certain, आप समझ सकते हैं कि मेरा कंडीशन क्या था, कुछ नहीं, कैसा भी करके पैसा कमाने का है, बाजार से कमाने का है. Right. तो then I went for a speculation also. मैंने किया ऐसा था. Right. And that was the biggest learning lesson for me as well as to all the investors. उसकी एक जो स्टोरी है ना वो रियली वेरी इम्प्रेसिव है. मतलब लर्निंग है कि मैंने GNFC में कम से कम आई लॉस्ट अबाउट एट दैट टाइम अबाउट 5-6 लाख रुपीज. स्लोली टोटल मेरा लॉस 5-6 लाख रुपया का हो गया था. उसके सामने मेरे पास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का उस टाइम आई हैड ए फिजिकल शेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विथ ऑल ग्रीन फॉर्म्स, ट्रांसफर फॉर्म्स Right. एंड फिजिकल. मेरा कपबोर्ड में रहता था सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन 5-10 हजार शेयर. इधर मेरा GNFC में वीकली सेटलमेंट होता था, उसमें मेरे को 10,000 भरने को आया. तो क्या करने का, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मैंने 25 रुपये में लिया है, 75 हुआ है, 85 हुआ है, 95 हुआ है, 100 हुआ है, 200 शेयर बेच डालने का वो. So on the losses of my speculative GNFC, I used to give delivery of software solution. तो धीरे धीरे करके मेरा पूरा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन उसमें से निकल गया. Right. बराबर. मैक्सिमम प्राइस एट विच आई मस्ट हैव एग्जिटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मस्ट बी अबाउट 250 रुपीज. Okay. सिंस आई ब्रॉट इट एट 25, आई थॉट कि चलो GNFC का लॉस हुआ तो उसके सामने ये निकल गया. Over a period of. ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मेरे ख्याल से 9 months to 1 year. Okay. स्लोली वो निकल गया. So starting में आपका इतना लॉस हो गया था इसमें. हाँ हाँ. Okay. और वो क्या था कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और वगैरह सब बढ़ रहा था, तो मेरा एक हिम्मत बढ़ गया कि चलो स्पेकुलेशन कर ले, शायद इधर तकदीर ने साथ दिया है तो इधर भी साथ दे देगा. सिंस आई वाज डेस्परेट टू मेक फॉर्च्यून, Right. और सर्वाइवल था, एक बच्चे को था, सब था, और अगेंस्ट फैमिली. तो एट दैट टाइम माई साइकोलॉजी वाज कि कैसे भी करके स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का, हाउ टू मेक बिग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज टू स्पेकुलेशन. Right. आई नेवर हैड ए फीलिंग कि भाई थ्रू इन्वेस्टिंग यू कैन मेक सच ए. मगर मैंने इन्वेस्टिंग भी किया था और बाद में स्पेकुलेशन भी किया. Right. पहले छोटा मोटा स्पेकुलेशन करता था, मगर जरा GNFC में ज्यादा कर लिया आउट ऑफ प्रोपोर्शनल. ये देखो एक कॉमन साइकोलॉजी है, इफ यू फेल ने देन वो हमारे गुजराती में रम तो जुगाड़. रम तो हार तो जुगाड़ बंगू. those who are losing Right. will have a second lot with a double Double capacity, capacity, yes. that type of thing. Right. तो अपना फॉर्च्यून तो था ही नहीं. Right. वी वर ट्राइंग कि चलो नसीब आज नहीं तो कल कभी खुलेगा क्या मालूम. Right. तो मगर एक चीज है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई लॉस्ट ऑल माय सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन,
And then the real journey of software solution began. Started उसके बाद. It went up to 7,000 rupees, I think. Yes. From 200 rupees. Yeah. From so 200 It was Wow. the story stock of. Yeah. 2000. Wow. तो उसका मुझे बहुत शौक लगा कि साला ये अपने घर में माल था. तो मेरा 5 लाख का जो नुकसानी था ना, the 5 lakh loss on speculation, Right. actually landed with 2 crores of loss to me. Right. Had I kept that software solution, the value of that stock would have been more than 2 crore at that time, which today can be more than 25 crore or 50 crore. Right. मगर I have to accept my destiny. जो था वो था. मगर वो from that day onwards I made a decision कि भैया कभी भी speculation नहीं करने का है. Because speculation से direct loss से speculation से जो indirect loss, ये सब we are talking about financial matter. उसके बाद में जो agony, जो Mental mindset agony. और जो wife के साथ जो stressful life, that is indescribable. That I cannot say anything. Right. एक चीज है कि मेरे वाइफ ने, जब मैं स्ट्रगलिंग पीरियड था तो मेरा आई हैड अ वेरी स्मॉल हाउस 410 स्क्वायर फुट, Okay. 1 bedroom converted, my passage was converted into kitchen, Right. kitchen is bedroom and hall. उसमें मेरे को इतना एनुअल रिपोर्ट प्लस ऑल 5-6 टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर, तो आई यूज्ड टू हैव लम्स ऑफ न्यूज़पेपर Right. and I used to read up to 2 o'clock in the night. सी, और मेरा वाइफ भी गुस्से में आ जाती है, बोलते हैं साला कुछ कमाता है नहीं और पूरा दिन ये न्यूज़पेपर पढ़ने का, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का, इधर से ये लाने का, इसमें खर्चा करने का. Right. When I used to bring 100 rupees magazine, which might have cost 2,000 rupees from original price, Right. I used to bring it 100 rupees. वो 100 रुपीज़ में भी मेरी वाइफ मुझे गुस्सा करती है कि तू ऐसा क्यों खर्चा करता है, अपने को घर पे खाने के लिए कुछ है नहीं, तो 100 रुपया खर्चा करता है मैगजीन के पीछे. Right. एक बार उसने मुझे बोल दिया था कि ये सब रद्दी बद्दी सब फेंक दे. तो एट दैट टाइम आई गॉट वेरी एंग्री विद हिम. मैं उसको बोला था मेरी वाइफ को कि प्लीज़ तेरे को मुझे जो भी बोलना है बोल, मेरा न्यूज़पेपर को रद्दी मत बोल. दिस इज माई लक्ष्मी. आई एम गोइंग टू मेक माई फॉर्चून फ्रॉम माई दिस न्यूज़पेपर. Right. तो उस टाइम मैं भी गुस्से में आ गया था और मैंने उसको बोल दिया था कि तेरे को रद्दी लगता है और तो तेरे को जाने का है तो तेरा घर पे जा, मगर ये इसको आई विल नॉट लिव दिस न्यूज़पेपर. मैं बोला ये रद्दी नहीं है. Right. रद्दी तेरे लिए हुई ना, मेरे लिए रद्दी नहीं है. Right. दिस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट इज अ लक्ष्मी टू मी. सो आई स्टिल नाउ आई रिस्पेक्ट दैट टाइप ऑफ. मैं घर पर भी कभी न्यूज़पेपर को कोई मुझे न्यूज़पेपर से कोई कुछ गलत बोलेगा तो आई विल गेट वेरी एंग्री कि न्यूज़पेपर को गलत मत बोल, बिकॉज दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर. इट इज जस्ट लाइक योर लक्ष्मी एंड सरस्वती, Right. where you get the right form of information. Right. And how you interpret that and how you use that information, it is up to you. Right. तो सॉफ्टवेयर का मुझे बहुत लेसन मिल गया कि भाई ये नहीं करना है. देन सक्सेस केम इन एलिकॉन इंजीनियरिंग. आई बॉट एलिकॉन इंजीनियरिंग एट 28 rupees when whole stock market was after IT stocks, विजुअल स्टॉक ये वगैरह वो सब पूरा था. Okay. At that time software एलिकॉन इंजीनियरिंग was available at 27 rupees. Okay. So I went with my 2-3 friends to the first AGM of. मतलब it did, after I bought the stocks Silicon Engineering, I went into the Anand Gala Vidyanagar for the AGM. At that time, Silicon Engineering and MCO Silicon are having one AGM. One day they have 2 AGMs. Morning Silicon, afternoon MCO Silicon. So what was the thought process behind the two stocks? That was the thought process, was the capex cycle. Capex cycle. Okay. Capex cycle was. I had read article that India is now going for a capex cycle. But what made you select those two specific stocks out of that? Because I think at that time Silicon Engineering was available 27 rupees, and I went through all the his annual report and everything. They had a good setup. Okay. That was the biggest point. Okay. And they had some cash in their balance sheet. Okay. And they were doing exactly what India wanted to do for power segment. They were supplying to the equipment of power equipment. Okay. So that was a very cheap stocks. Okay. So I bought Silicon Engineering as well as Dynamatic Technologies. Right. I bought Dynamatic Technologies also at around 28, 27, 30 rupees.
because at that time Dynamatic Technology was in hydraulics as well as they had a subsidiary which was doing auto ancillary. Okay. So I was very much interested in auto ancillary at that time. And I found out there is a huge value in their balance sheet. So when we went for a Helicon AGM, we had a conference with Bhanubhai Patel, the chairman of Helicon Engineering at that time. Right. He expired now. So meeting was at around 11 o'clock, but in morning 9 o'clock, we had, after all fresh up and breakfast, Bhanubhai called 4 of us to have a meeting at a conference room. And he explained me how he built Helicon Engineering and what is his thought process, how they are bullish about whole segment as well as power. And one of the most important statement he gave me, that which I still remember, is that in spite of government, India is progressing. India is progressing in spite of government. Right. So you imagine, suppose we get a conducive government, what will happen to India? Right. So we had a first meeting and he explained me thought process about why he bought this and what is the future of this thing. And we were very much impressed with that thought process of Bhanubhai. Right. And he was very passionate about his business. And then we had a look at the factory of Helicon Engineering. It was a truly tremendous factory. 27 rupees, unbelievable. Even I can thought that suppose he sells off his all material, all plant and machinery in scrap, he will get more value plus the land. So I was very bullish about Helicon Engineering. At that time we had a good quantity of Helicon Engineering as well as Dynamatic Technology. I had been to Dynamatic at Bangalore also, their AGM. And these also you held for a long time? Yeah. Okay, so what I believe there were only, you've described me before, there were only 4 or 5 people of y'all, those who were really interested in Helicon at that point. Yeah. Nobody Helicon. One of the interesting thing, Puneet, is that we had this type of conference where Bhanubhai was sitting, we 4 members are sitting, right. And there were 2 more from Bombay had come for the AGM. Okay. I think one was from Ventura, Mr. I forgot the name. Kapadia ke कौन था Ventura में कौन है head of the Ventura, and one of the Jamai of this Manu Manek का Jamai था Vikram. You know Vikram? No, I wasn't that active. Vikram करके एक आदमी था. Okay. He is son-in-law of old speculator Manu Manek. Manu Manek is a World knows Manu Manek. Right. He was known as a Cobra, Bear King of Bear. Bear King. Bear Right. King. Right. हम लोगों का साथ में ही मीटिंग था पूरा. Okay. What Bhanubhai told to V4, same thing was told to them also. Right. और मैं वो आपको उधर की अंदर की बात बताता हूँ कि वो भानुभाई का उधर से फोन से हमने सर्किट मार के माल लिया था उस टाइम. Okay. 9 o'clock we had a meeting. Right. About 10:30 we came to know कि नहीं ये सब चीज बराबर है. Right. और we had a first circuit कि भाई जो माल मिलता है वो ले लो हेलिकॉन इंजीनियरिंग. और we came to know after some times that वो जो बैठा था सामने वाला वो बेच रहा था. अच्छा. See, the only my contention is के same conversation में we thought it is a very Different. positive. Great idea. Somebody else thought it. They thought कि वो ये सब खत्म हो गया, ये भाव में सब कुछ आ गया, तो they were shorting, they were selling their stock. That I came to know after some time, after 10 days. Okay. Because one of my friend was holding account with Ventura Capital, Okay. and his account was also sold by that Ventura Capital में. Right. कि मेरा तो बेच रहा है हेलिकॉन इंजीनियरिंग में, बोला हम लोग तो ले रहा है. उधर से हेलिकॉन का जो जर्नी चालू हुआ है, आई थिंक अनबिलीवेबल. सी द सक्सेस इज नॉट दैट हेलिकॉन, मगर रियल सक्सेस यही था कि पुनीत भाई कि मेरे पास पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे को मेरे पास कुछ लेने के लिए पैसा नहीं है, और फिर भी मैं स्टॉक बेच नहीं रहा था. दैट वाज माय रियली कन्विंसिंग पावर. Right. So Helicon went from 27 to 75, 80, 80 to once again came to 60, 60 to 120, 120 to 75. ऊपर नीचे करके चलता ही था. That was you bought in 2003, suppose. नहीं, I sold off around 2003-4. अच्छा. Acha, you bought it in 2000 only when IT boom was there. IT boom was there. Right. So you bought then. Then
उसके बाद में एलिकॉन में जो फैंसी आया ना, देन आईटी बूम सबसाइड हो गया. Right. देन एवरीबडी वाज आफ्टर कैपेक्स साइकिल. देन जैसा आईटी का बूम था वैसा ही कैपेक्स साइकिल का बूम चालू हो गया. Right. That was the first कैपेक्स साइकिल एज पर लास्ट 10 साल में बूमिंग पीरियड था. Right. सो सी पुनीत भाई, रियल पैसा कहाँ बनता है, कैसे बनता है? सी आफ्टर दिस सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, Sure. you are going with one thought process. Right. Market is going with some other thought process. Right. Suppose your thought process and market thought process comes parallel. That is the time where you make money, huge money. Either you are ahead of the time or you are behind the time. Right. या तो आप So this is where you said that luck plays very important. luck plays very important. Right. When we bet on capex, Right. and after taking deliveries and everything, after 6 months, after 1 year, market was also started discounting capex cycle. Right. People, there were talks of everybody was talking capex. Then और जो चीज आप 27 में लेते हैं वो 127 हो जाता है, तो उसमें दो आदमी आ जाता है कि नहीं ये भी अच्छा है. बाद Right. में 27 to 127, 227, 327, then keeps on. Then stocks market follows the inverse law of economics. The higher the price, higher the demand. Right. So I entered in 2004-5. So I remember dynamatic technology. So time pe it went up almost 50 to 100 times, and so was Yeah. Elecon. You were owning both Elecon as well as Dynamic technology. So so अभी तक जो conversation से I understood, first when you say luck plays a big role, Very big role. when you say that, you actually, what you're implying is that you can be way ahead of your time, and that will check your patience. Because let's say you bought Pantaloon, and Pantaloon, the organized retail, rather than coming the boom in that year, let's say the boom came 5 years Right. down the line, it becomes very Before. difficult for you to Hold on that time. hold on that time. So you could have missed a lot of good stocks which you buy ahead of time. Yeah. So there the luck factor I understand. I also understood that when you are evaluating a company, and in all the examples you have mentioned one thing, that you met the promoter and you met the person who was in charge and he explained you the concept. So I'm assuming, and there I wanted to answer also, how big that component, that management and promoter and all this, how big that component is for you to invest in a company. See, you don't take it for granted that meeting a promoter is the most important thing. Okay. See, this is my teaching. So that is a top priority no matter what. No, meeting a promoter is not top priority. Okay. First, to identify a sector is the top priority. Okay. I will still improve. Okay. Identifying a right segment Right. of next 3 years down the line, next 3-4 years. Right. See, there are segments which are booming now. Right. सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आज उसका लेके कोई मतलब नहीं, बिकॉज मार्केट इज डिस्काउंटेड. Right. सो टू आइडेंटिफाई अनडिस्कवर्ड सेगमेंट ऑफ फ्यूचर इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. सो इट इज जस्ट contrarian call. Right. So my philosophy was to found out a contrarian segment which has a huge potentiality and to stay with the leader of that segment. Leader in terms of? Leader in terms of their Size? capacity, size, Okay. their vision. Okay. Because see, if multi-bagger leader stocks is- कभी होता है कि when I buy one stocks Right. and that stock after I bought at X, my target is that if it goes to 100x, then mutual funds should buy at 100x. Right. Then I make a money. Right. Then it will go from 100x to 200x, 300x, 500x. But suppose stock has a capacity from X to 5x, story ends. And what are the criteria of mutual funds? They want to get the leader. Right. So when first of all, when I am a contrarian thinker, Right. I am thinking of a contrarian segment. Right. And within the contrarian segment, suppose I go for the laggards, Right. I will have a huge patience to pay. Right. I may get some reward or I may not get. Right. Because reward will go to only leaders. Right. So one of the lesson which I learned from all my struggling period was कि भाई Infosys आया, successful of Infosys क्या था, because he is the leader in that segment. Wipro, Satyam at that time, they are the leader 2, 3, 4. So I try to study the top 3. Players. Who are the top 3 leaders? And do you buy all top 3 or do you buy one of those top 3? Any one of top 3. One of the top. One of the top 3. But what if you're wrong? But if the leader is, lagging later on, and then some smaller company comes up and take away the leading position?
Do you shift positions? Is my question actually. If my segment is right, Yeah. then I will stick to it. Otherwise, I meet the management और उसका vision सही होएगा तो I will stick. I will say let me give some time to the management. Okay. Suppose management अगर वही सोचता होएगा. Okay. So management is important, but जो आपने बोला ना कि you calculate कि X पे does it make sense to me? So my next question to you is what is your evaluation criteria? किस base पे आप assets को ज़्यादा value देते हैं? Earnings potential? I'm sure everything plays a part, but what is your way of looking at it? Actually में the vision of the company or the vision of that segment वो flavor में आएगा कि नहीं? That is very important. So which are the future wealth generating segment क्या होना चाहिए? But how do you put into numbers? मतलब when you're thinking. See, I will tell you as we are talking now. Right. Okay. Right. So it is very difficult for me to explain what was my thought process at that time. Absolutely. बराबर है? Right. वो तो मुझे भी अभी याद नहीं होएगा. Absolutely. It is absolutely or useless. मतलब I may be शायद fooling कि मैं क्या सोचता था. Right. Let us think today on 21st of March. Right. अभी मार्केट सिचुएशन क्या है? Let us think it fresh. Right. अभी my thought process is के इंडिया अभी जो लेवल पे है, which are the emerging segments? See, what I thought of Elecon engineering at that time, capex cycle था. Right. वैसा अभी similar type of opportunity do I find? Right. Yes, I find. Okay. Where do you find? I find it in railways. I find it in defense. Because they are absolutely virgin segments. Right. आज तक डिफेंस में कोई प्राइवेट पार्टिसिपेशन कोई नहीं आया था. Right. बिकॉज मोदी गवर्नमेंट ने उसका एजेंडा में है, दे वांट कि डिफेंस शुड बी ए प्राइम टारगेट. Right. दे डोंट वांट एनी इंपोर्ट. Right. Reduce the import. So I feel defense will be the next segment for next 2 decades at least. Okay. Yeah. अभी आप मुझे बोलेंगे कि डिफेंस में अभी क्या लेने का, तो इट कैन बी ए थोड़ा क्वेश्चनेबल है क्या लेना क्या नहीं लेना, क्योंकि मगर माय थॉट प्रोसेस इज वेरी क्लियर. मेरे को डिफेंस में जाना है. डिफेंस में अभी कौन सा कंपनी लेना है, अभी कौन सा अवेलेबल है लिस्टेड एंटिटीज. सो अभी सी मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी विच इज एज ऑन टुडे अवेलेबल इन डिफेंस इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. बराबर है. आज 1100-1200 का जो भी भाव है, और उसकी पोटेंशियलिटी काफी है. बीइंग ए पीएसयू सबसे पहले तो इट इज निग्लेक्टेड बाय द मार्केट. एक स्टेटस पीएसयू का एक लेवल लग गया है, तो इट इज ऑलवेज अवेलेबल एट ए चीपर वैल्यूएशन. सेकंड थिंग, उसके पास सब कैपेसिटी है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, मनी है, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज. और अभी भी मैंने आपको वो सेमिनार में बोला था कि व्हाट इज व्हाई आई लाइक डिफेंस, बिकॉज सी on 28th of this March, Parikar is coming out, Defense Minister is coming out with the statement, procurement policy, जो कल बोला था उसने. वो मैंने 8 दिन पहले, वो that is I have a, जैसा मैंने बोला ना फोल्डर, मेरा घर पे आप आए तो मैं आपको पूरा डिफेंस का फोल्डर दिखा दूंगा क्या है डिफेंस. This is what you discussed के मतलब in the last meeting के एक procurement policy will come. और they have given one short term of IDDM, indigenously designed and developed. इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर. वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक एकदम वर्जिन कॉन्सेप्ट है. अगर उस पर कोई कंपनी आ जाएगी, ये क्या है कि डिफेंस पारिकर क्या कर रहा है कि जो भी डिफेंस लेगा ना उसमें से वो बोलेगा 40% आई वांट टू बी आईडीडीएम. कि वो इंडिया में उसका कॉन्सेप्चुअली डिजाइन किया हुआ हो, डेवलप इधर किया हुआ और मैन्युफैक्चर इधर किया हुआ है, चाहे कंपनी फॉरेन का होएगा, मगर दैट पर्टिकुलर पार्ट 40% ऑफ दैट सिस्टम्स विच फॉरेन कंपनी सप्लाइज टू द डिफेंस, 40% शुड बी फ्रॉम इंडियन काउंटर पार्ट. सो दिस इज वेरी बिग थिंग. बराबर. अभी आज तक अपने को कोई ऐसा स्टॉक्स बाजार में फुल्ली डेडिकेटेड टू डिफेंस वैसा नहीं है. But there are derivatives of stocks. For example, Premier Explosive, one of the stocks वो है डिफेंस के अंदर, fully dedicated to defense है. बाकी आप देखेगा तो अभी टाटा के अंदर भी डिफेंस है. टाटा पावर में टाटा एसीडी है, स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन. That is a part of, but that part is very small. 5% of the turnover of Tata Power.
Right. So you have to take either Tata Power पे call लेना है, या तो wait till SED is diverged from Tata Power and has a separate listed entity. Right. महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी डिफेंस है, Right. लार्सन एंड टुब्रो में भी डिफेंस है, Right. रिलायंस में भी डिफेंस आ जाएगा. मतलब सब कॉन्ग्लोमरेटेड में डिफेंस तो है ही. Right. मगर देयर विल बी सम न्यू कंपनीज व्हिच कैन इमर्ज. आई एम नॉट श्योर कि विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मगर आप अपने पास दिमाग में एक सही होएगा कि दैट न्यू कंपनी कैन इमर्ज, और उसकी जो अगर पोटेंशियलिटी देखा जाए तो दैट कैन बी ट्रेमेंडस पोटेंशियलिटी. डिफेंस एंड एरोस्पेस कैन बी ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी. जैसे अभी HAL का IPO कैन ऑल्सो कम एट. HAL का IPO आ जाएगा. HAL का कोई वेंडर होएगा, वो IPO लेके आ जाएगा. दे विल टेल यू आई एम सप्लाइंग टू HAL. Right. Like what Dynamic Technology is now doing, they are supplying their aerospace division. उसके पास एक डेवलप किया है, वो 8 साल पहले किया था. मैंने उधर ओपनिंग में भी मैं गया था. Right. मगर उसका प्रमोटर मैंने पैसा फॉर्च्यून बनाया है Right. डायनामिक टेक्नोलॉजी में. Right. अगर उस टाइम स्टॉक चल गया और वो एयरोस्पेस की बात 8 साल पहले कर रहा था, वो जाके अभी फ्रूटफुल हुआ है. तो नाउ दे आर मेकिंग द विंग्स ऑफ द प्लेन्स. Right. तो वो बोइंग सबको सप्लाई करने वाला है. Right. सी ये डिफेंस और एरोस्पेस इतना हाई स्किल इंजीनियरिंग है कि प्रमोटर बोलेगा मैं सप्लाई करेगा, वो सप्लाई कर भी देगा. देन टू गेट अ रिपीट ऑर्डर इज अ प्रेस्टिजियस थिंग. सप्लाई करने के बाद वो रिजेक्ट भी कर सकता है. Right. वो उसका देयर इज अ टाइम कि वो उसको मेच्योर होने में टाइम लगेगा. वेदर ही इज फुली डेडिकेटेड फॉर दैट टाइप ऑफ थिंग, दैट ओनली वी कैन. अभी उसको वी कैन नॉट शट द डोर कि वेदर ये होएगा कि नहीं होएगा. We cannot take a call at this way. Fair enough. मगर at that time my call on Dynamic Technology was at 28 rupees. Elecon was at 27 rupees. See, most important thing is at what price you enter. See, as a investor मेरे पास क्या है? I have got the price and I have got the time, patience Right. to hold the price. Right. If my entry level is reasonable, I can hold for a longer period of time. Fair enough. I may be early. I may be 2 years early, so I can hold for 2 years, 3 years. But my question is that when you say my entry price, is that entry price on the basis of the earning potential of the company, or is it based on the existing assets of the company? See, earning potential ही मुझे idea नहीं है. Idea देखो, नहीं. see, it is useless. मतलब To वो speculate, speculative हो जाता Speculative, है. right. Right. Even at that time, मैं आपको एक सही एग्जांपल देता हूँ. After meeting with भानु भाई, Right. तो मॉर्निंग में तो वी वर जस्ट इंट्रोड्यूस टू भानु भाई के. बॉम्बे से 4 आदमी एनालिस्ट आए. Right. तो पूरा दिन उसके साथ खाना खाया, दोपहर में खाना खाया. Right. आफ्टरनून में एम को एलिकॉन का मीटिंग हुआ, उसके साथ टी कॉफी वगैरह. तो एक बार इंटीमेसी हो जाता है. पूरा दिन 8 घंटे एक आदमी के साथ रहेगा तो. Right. तो वेन में आफ्टर एम को एलिकॉन का मीटिंग शाम को 5 बजे खत्म हुआ, तो भानु भाई ने वो भी खुला दिल से बताया कि आपको क्या लगता है एलिकॉन में आप क्यों इतना बुलिश है, कि मुझे तो उतना फ्यूचर नहीं लगता है. वी वर टॉकिंग वेरी बुलिश अबाउट एलिकॉन. तो मेरा एक माय पर्सनल थिंक थॉट प्रोसेस इज के जो सही में जो एनालिस्ट और वैल्यू पिकर्स हैं, he should be ahead of the management of the company. He should think ahead of the management. He must have a vision which management doesn't have. By how will he have that vision if the management doesn't have the vision? मतलब, what makes you think that vision? Yes, that is most important. That is the real trick of the trade. Right. हम लोगों को ऐसा एक विजन था कि इंडिया में पावर शॉर्टेज इतना है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है. मगर भानु भाई being right person on ground level, he was suffering from the failure from last 3-4 years. So he was disheartened. वो बोलता है नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा. We were very optimistic. नहीं होएगा, आज नहीं, जो नहीं हुआ है वो होएगा. Like the management sees reality every day. Right. जो आज तक नहीं हुआ है वो अगर you think कि वो होएगा, then अगर वो होएगा तो फिर क्या होएगा? अगर वो होएगा तो क्या होएगा? वो प्राइस में आ गया. वो उस टाइम प्राइस क्यों मिलता है? क्योंकि होल मार्केट इज नेगेटिव. Right. एंड दूसरा पुनीत जी, मोस्ट सक्सेसफुल इज यू हैव टू लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न. देखिए, ये हाईली ओन स्टॉक्स बाय म्यूचुअल फंड, हाईली ओन स्टॉक्स बाय एफआईआई, तो उसका डिसेक्शन हो गया है पूरा. नथिंग, पूरा कुछ नहीं है. द रियल मल्टीबैगर इज व्हेन देयर इज नो म्यूचुअल फंड, नो एफआईआई, नथिंग, नो इंडिविजुअल, कोई हाई स्टॉक्स नहीं है. वो स्टॉक्स में अगर आप सही तरीके से ले लेते हैं, उसका 5 टाइम्स होने के बाद एक फंड आता है, आफ्टर 5 टाइम्स दूसरा फंड आता है, आफ्टर 5 टाइम्स तीसरा फंड आता है.
देन फंड का साइकोलॉजी हर्ड मेंटालिटी है, राइट, देन इट इज वो उसका कैपेसिटी में आ जाता है, नाउ इट इज आवर मार्केट कैप सही है, वॉल्यूम सही है, ये सही है, वो सही है, राइट. सो वैल्यू पिकर्स अपन क्या है, वी आर जस्ट लाइक ए रेक पिकर्स. मॉर्निंग में आके रेक पिकर्स क्या करता है, उसको तो एक ही है कि ये 6 रुपए से प्लास्टिक लेके जाने का है बराबर, राइट, एक्यूमुलेट करके किधर भी देने का है. राइट, सो वी आर लाइक दैट, वी हैव टू पिक, वी आर रेक पिकर्स, वी आर एक्यूमुलेटर्स ऑफ स्टॉक्स, वी हैव टू एक्यूमुलेट. राइट. आज 200 मिला, जब भी हम लोग स्टॉक्स लेते हैं तभी उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, वो तो जब भी एफआईआई आती है तभी वो रोज का 1,00,000 शेयर का वॉल्यूम होता है. राइट. तो जनरल टेंडेंसी क्या है कि स्टॉक्स में वॉल्यूम होना चाहिए, स्टॉक्स में ये होना चाहिए, स्टॉक्स में, वो तो जब एफआईआई आएगा तभी होएगा. व्हेन यू एंड आई पिक द स्टॉक्स, उसमें वॉल्यूम नहीं होता है. राइट. मुझे आज रोज का 500 शेयर मिलता है, 200 शेयर मिलता है, 300 शेयर मिलता है, तो मैं अपने हिसाब से ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आई ट्राई टू एक्यूमुलेट द स्टॉक. राइट. So उसके बाद में जो भी होता है, उसके बाद में एफआईआई का आता है, उसके अंदर वो सेगमेंट में करंट आता है, देन एवरीबडी टॉक्स ऑफ कैपेक्स साइकिल, नाउ एवरीबडी विल स्पीक ऑफ डिफेंस, सपोज राइट. टुडे आई एम डिस्कसिंग डिफेंस. राइट. सो आफ्टर सी, आज आपके पास डिफेंस का कितना आर्टिकल्स है, हार्डली यू विल फाइंड सम आर्टिकल्स. मेरे पास आज घर पे आएंगे ना, तो आई विल गिव यू 50 आर्टिकल्स ऑफ डिफेंस विच हैज कम ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6 months. Interviews of Parikar has come over last 6 months. I read in between the lines क्या है, इसका पोटेंशियलिटी क्या है. राइट. 1,65,000 करोड़ का ये करने का है, 87,000 करोड़ का ये करने का है. अभी आप इसका लेक्चर देखेगा तो नितिन गडकरी का रोड के अंदर क्या ड्रामेटिक कर रहा है काम. राइट. वो आज तक आपने देखा नहीं था. कल का आपने इंटरव्यू देखा, उसका मिंट में सब था. ब्यूटीफुल इंटरव्यू ऑफ नितिन गडकरी. आई हैव नेवर सीन ए मिनिस्टर लाइक नितिन गडकरी. जो उसके सब टिप ऑफ द टंग है उसको. वो पूरा ऑडियंस को, ही इज चैलेंजिंग द ऑडियंस कि यू आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट रोड, आई विल गिव यू आंसर. राइट. एनएचएआई का ये प्रोजेक्ट किसको गया, कैसे गया, क्यों गया, ये प्रोजेक्ट क्यों स्टॉल हुआ है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट प्रोजेक्ट. राइट. So this type of we are thinking, very first time we are seeing this type of minister. So one more thing here कि जैसे आपने बोला Elecon Engineering, so you bought in 2000 and sold in 2004. So you must have made a lot of money, but there was much more money made after that. What price है? चल पुनीत जी आप बताइए मुझे. बताओ. अभी आप मुझे बताइए. मेरा एंट्री लेवल तो मैंने बोल दिया 27 में. मेरा लाइफ का वो भी बता दिया आपको. राइट. At what price I have got out from Elecon? Elecon. Yeah. If I have to make a guess. Guess. अभी आपको तो मालूम है कि ये फॉर्च्यून मेकर है, तो you will guess widely. Yeah. हाँ. 20, 30 times, 50 times. 50 times. My guess. Yes, guess 50 times. Yes. 30 rupees stocks into 50 times means 1,500 rupees. 1,500 rupees. My guess. Guess. Right. Now increase. I know, so I'll not say. Okay. 100 times. So maybe 3,000, or let's say near about that. अच्छा, अभी भी एलिकॉन का मैं स्टोरी बताता हूँ. Okay. एलिकॉन had a 1:2 बोनस, एक शेयर पे 2 बोनस आया था. Okay. Before I sold. Okay. And bonus and split. Split was 10 rupees to 5 rupees. Okay. So whatever price you are today you are seeing on stock exchange, you have to multiply by 15 times. 15 times. Okay. 15 times. Okay. बराबर है. Right. एलिकॉन went from 30 rupees और आफ्टर ये एक्स बिट होने के बाद इट वेंट अप टू 375 और 400. तो मतलब 5,000 का भाव हुआ था. 5,000. Okay. Okay. I didn't get out at that time. Okay. Okay. When it started falling, I get out at 325, 330, 335. So around 4,500. उस टाइम में मैं निकल गया. तो 30 रुपए से 30 रुपये से लेके 4,500 तक का मेरा जर्नी है. अभी So that अभी was- now I will tell you why I went at 4,500. What made me Yeah. sold? That was That my is next very question. important. That was my next question. What makes you sell the stock? What made me sell? Yeah. See, every year we were going to AGM of Elecon. 4 years. So sold in 2004, 5, yes, 7. Around 4. Right. 4 or 5. Right. बराबर है. Bhanubhai expired after 2 years. When we bought around 2000, Bhanubhai expired around 2002. Then his son पटेल दूसरा है वो took over. वो भी उसके साथ पहले ही था.
ओके. उसने क्या किया कि स्टॉक्स बूमिंग हो रहा था, उसको सब फंड वाला मिल रहा था, तो उसको भी फ्लेवर आ गया था. He also started paying with the stocks. Then he started borrowing heavily from the banks. तो उसका बोरोइंग एकदम बढ़ गया. वी कैन नो फ्रॉम कि उसने ये लिया, ये एक्सपांशन करने का है, वो करने का है, वो करने का है. तो हमने उसको मीटिंग में भी बोला था कि यू आर नाउ ओवर लेवरेज हो रहा है. वॉट एवर वी आर, एक क्वार्टर ऐसा है, एवरी क्वार्टर द स्लोप वॉज गोइंग दिस वे, ईयर बाय ईयर. फ्रॉम 27 से लेके जब भी तक लिया था तो स्लोप ऑलवेज अपवर्ड ही जाता था. देन वो स्लोप प्लेटो हो गया बिकॉज वॉट एवर दे वर अर्निंग, more earning they goes to interest payout. तो फर्स्ट रेड सिग्नल्स आ गए, रेड फ्लैग आ गए. इंटरेस्ट तो उसके साथ हमारा आर्ग्यूमेंट भी हुआ. अच्छा. कि आप तो नेचुरली कोई भी मैनेजमेंट होएगा, ही विल शो मी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो कि ये करेगा तो ये होएगा, ये होएगा, ये होएगा. बाद में दूसरा क्वार्टर में भी कोई ज्यादा इंप्रेशन नहीं हुआ. देन वी हर्ड दैट दे आर कमिंग आउट विथ रिसोर्ट, मधुबन रिसोर्ट करके जो उसका था ना, they did a lot of diversification. तो वो they made a resorts of about 100 crore. अच्छा. वो न्यूज आ गया. But it was not in this listed entity, but it was their private resorts. और दूसरा एक चीज अपन सोच लिया कि अभी इतना हो गया, एक बार अपने को दिमाग में आ गया, रेड फ्लैग आना चालू हो गया कि ओवर बोरोइंग हो गया है, रिसोर्ट्स कर रहा है. और देन वी थॉट कि अभी ये पैसा अपने पास हो रहा है, वी आर मेकिंग ए ह्यूज मनी. सो दिवेश भाई इनर कॉल आता है, दिवेश भाई इनफ इज इनफ, नाउ यू फाइंड आउट अनदर एलिको. देन आफ्टर सर्टन लेवल ऑफ कैपेक्स, मतलब मार्केट के होने के बाद यू ओनली गेट परसेंटेज एप्रिसिएशन. जो मल्टीपल एप्लीकेशन स्मॉल से जाता है, स्मॉल से मिड से लार्ज, बाद में यू विल गेट प्लेटो और देन यू विल गेट परसेंटेज एप्रिसिएशन. And it did well in 2005, 6, 7 also a bit, थोड़ा टाइम और भी फिर से. तो अभी मैं जो फर्स्ट मीटिंग में मेरा दोस्त के साथ जो गया था, वो दोस्त को मैंने, हम लोग 4 साल से जाता था. वी वर डिस्कसिंग ऑनेस्टली, शेयरिंग आइडियाज. इट इज हिज जजमेंट, दिस इज माय जजमेंट वेदर बुक द प्रॉफिट. मैंने उसको बोला, सुनील भाई મને હવે સારું નથી લાગતું, આ લફડા કરે છે, ઓવર લેવરેજ કરે છે ને આ એને રિસોર્ટ્સ બનાવીને આપ્યો છે, આમાં આપણે હવે નીકળી જવાનું. उसको मैंने 10 बार समझाया, मगर वो ही फेल इन लव विद द स्टॉक्स. तो वो बोला, दिवेश भाई ये टेम्पररी फेस है, ये है, अभी ये साइकिल खराब जाएगा, ये साइकिल खराब जाएगा, उसके बाद में ये है. मैं मेरा निकाल दिया, उसने नहीं, उसने आज तक नहीं निकाला है. और वो अभी मुझे हर दफे मिलता है, तभी बोलता है, दिवेश भाई आप निकल गए. दैट स्टॉक्स फ्रॉम 325, 330 वेयर आई सोल्ड इन 2004. आज 12 साल के बाद that stock came down to 20 rupees. Still at 50 rupees. 20 rupees, 20 to now it is about 50, 60 rupees. अभी 60 rupees. Still around. Still 60 rupees के आजू बाजू है. और he lost all the opportunity cost, दूसरा चला गया पूरा 10 साल में. So I remember, like say the first time I met in 2010-11. So a lot of people were just seeing that capex cycle was recovering, and that is what all reports were around. So Divyesh bhai says कोई रिकवरी नहीं हो रहा है, ये सब खाली ऑप्टिकल है, देखो साल भर बाद क्या होता है. So this is what he said. So that time I realized कि भाई understanding the cycle is important. Because that is the time all this capital good companies, road companies थोड़ा बहुत boom up आया था 10-11 में, and then they all went 50% down. See, thought process कैसे आता है? एक तो we are carried away by the past success of certain segments. True. Like IT sector का boom में common man makes mistakes, they enter at a higher top level. Right. When everywhere they all media talks of IT. Right. All press will talk about IT. Right. That is the time we should never think of IT. We should get out of IT. Right. और मेरा एक स्पेशलिटी, मतलब मेरा एक वो ये है कि मैं कोई एक स्टॉक्स बोलूँ ना 50 आदमी को, तो उसमें से अगर एक भी आदमी बोले नहीं ये स्टॉक सही है, गुड स्टॉक्स, तो मैं सोचूंगा ये गलत है. Every 50 people should not like that stock. So this is what happened when he said Ricoh India 3-4 years back. So right, and he was aggressively talking about के इसमें, and that is not, which was really, you could see also okay the company could change. Right. I think even I was very bullish about Japanese people.
And you haven't, and this is a company where you can't meet the promoters. Okay. So I read many articles about Japanese. Right. And somehow मेरा दिल से वो जापानीज कंपनी मेरा दिल से है. Right. But it was not performing till now. What happened? Last आपको मालूम है कि China and Japan had a clash. China had a clash with Japanese. Panasonic का शोरूम पे उसने सब हल्ला कर दिया था. Because they are traditional rival. Disputed territory के अंदर. Then जापानीज वाला बोला कि अभी जो चाइना में जो इन्वेस्टमेंट लास्ट 20 इयर्स से वो लोग कर रहे हैं, दे विल नाउ स्टॉप. मतलब दे विल रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट एंड दे विल डाइवर्ट द इन्वेस्टमेंट टू सम अदर प्लेसेस. एंड वेयर इंडिया कम्स इनटू द प्ले. आई थिंक टुडे इंडिया इज रियली ए बेस्ट प्लेस फॉर जापानीज पीपल टू कम. सी अगर जापान का मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, मगर एक चीज़ वेरी मच है कि जापान इज ए एजेड इकोनॉमी है, सेचुरेशन है, उधर ग्रोथ नहीं है. मिनिमम एज इज 60-65 ईयर्स. दे आर फुल ऑफ लिक्विडिटी. पैसा उसके पास काफ़ी है. वेरी कॉस्टली कंट्री. आज कोई भी टूरिस्ट को मैं बोलेगा को अगर इम्प्रेस करना है तो मुझे बोलेगा मैं 15 दिन जापान आया तो ही मुझे इम्प्रेस करेगा. टोक्यो जाकर रह गया 15 दिन, दुबई कोई जाके कोई मतलब नहीं है. टोक्यो जाएगा एक दिन का 50,000 का खर्चा है. तो रियल वेल्थी पीपल वही है जो जापान जाकर रह के आ जा रहे हैं. तो जापान के पास पैसा है. अभी वो पैसा आज नहीं तो कल इंडिया में आने वाला है. दैट इज व्हाट मोदी इज आफ्टर जापानीज पीपल. कि जापान से उधर अभी आज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है सर. पैसा कहीं जाना चाहिए. सी मेरा लास्ट सैटरडे का टॉक वही था कि मैंने एकदम सिंपल सब क्राउड को बताया कि सी वर्ल्ड इज फुल ऑफ लिक्विडिटी. वर्ल्ड के पास पैसा फुल है. अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टू नेगेटिव इंटरेस्ट रेट. इट मीन्स के ग्रोथ इज सेचुरेटेड फॉर वर्ल्ड. दे हैव नो प्लेस टू पार्क देयर मनी. बराबर है. नाउ यू थिंक फ्रॉम इंडियन एंगल, वी आर स्टार्विंग ऑफ कैपिटल. अपने पास भिखारी है, अपने पास पैसा नहीं है. एंड वी आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर. We can do for next 20 years what is done by Chinese people. तो इंडिया के पास पैसा नहीं है और इधर पोटेंशियलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है. वर्ल्ड को जो मांगता है वो इट कैन बी आइडियल कॉम्बिनेशन. तो आई थिंक मेरा आज की तारीख में मेरा जजमेंट यही है कि अगर अपना एटमॉस्फियर विच इज वेरी गोइंग इन दैट डायरेक्शन कंड्यूसिव हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से, आई फील द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड जो आएगा ना वो आप मैंने कभी सोचा नहीं होगा उतना आ जाएगा. माई अंडरस्टैंडिंग इज कि इट विल बी एटलीस्ट what we have got in last 10 years, we will get it in 1 year or more. Let's hope so. So we also get that fortune chance. But what happened in last 6 months? See, next question comes from you is why it is not coming. दिवेश भाई आप इतना बुलिश है तो अभी आ नहीं रहा है. क्यों आ नहीं रहा है? उसका भी मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मनी क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज वर्ल्ड इज फियरिंग कि इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है आज 68 रुपीज है. एवरीबडी इज फियरिंग इट विल गो टू 72, 73, 74, 75 समवेयर 8 to 10% डिवैल्यूएशन का चांसेस फॉरेन एक्सचेंज पे लगता है. राइट. वर्ल्ड ओवर हो रहा है. बराबर है. अच्छा, आज जिसके पास पैसा होएगा, सपोज यू आर हैविंग 1 बिलियन जापानीज येन या तो $1 million, योर फर्स्ट criteria is to preserve your capital. Then comes your appreciation. आप इंडिया में बोलेगा कि पैसा इंडिया वाले को दो, इंडिया वाला 8% इंटरेस्ट देगा. आप बोलेगा 8% मुझे आप पैसा देगा मगर मेरा कैपिटल का क्या प्रोटेक्शन क्या? आज मैं 68 में लेके आया और कल 78 हो गया तो यू आर लूजर ऑफ दैट मनी. सो वर्ल्ड वांट्स प्रोटेक्शन ऑफ द कैपिटल फर्स्ट. As soon as they get assurance कि नहीं अभी इधर प्रोटेक्शन है, उसके बाद में जो पैसा आएगा ने that we can not manage that money. And I think, see, अभी जो रुपीज 68, 69 हुआ, it can be bottom. Only time can tell me the bottom. After 3 months, after 6 months. Now we are at 66.50. Suppose after 10 days we will be at 65.50. Then people will realize that 68.50 was the bottom. Right. उसके बाद में क्या होएगा? When rupees goes to 65, the money which is
standing on the fence, that will rush to come. और this might have started. See, last 2-3 दिन से FIA का फिगर से वो लग रहा है, but it is very too early to. See, we are in a अपने को एक जजमेंट लगाने का नहीं. We are in a game of making a judgment. अच्छा, उसमें एक जजमेंट आपका सही आएगा, एक गलत आ सकता है. तो अगर अपना जजमेंट गलत होवे तो अपने को कितना नुकसानी होता है वो वी शुड बेयर इट इन माइंड. और जो सक्सेस होएगा तो व्हाट कैन बी द अपसाइड दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ. यू नेवर थिंक दिस कैन बी योर अपसाइड ऑफ योर स्टॉक्स. आई नेवर थिंक अपसाइड ऑफ योर स्टॉक्स. Because that limits you, you can sell out early also. मैंने अभी ये सैटरडे को मैंने एक ही बोला था, वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स विच ऑल फंड मैनेजर्स दे कम आउट विद द रिपोर्ट, ब्रोकरेज हाउस Put a target. is a target. Never give target. Right. You will always fail in target. I can challenge you. Right. You buy stocks at 100 rupees. Right. Your target is 150. You never put word target. Use word review. At 150 you can review. It is good. It can go to 350. Right. At 350 you review. It can go to 550. It can go to 1050. दिव्य एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आपने बोला कि मैं एक विजन बनाता हूँ, एक व्यू लेता हूँ और उसके बाद एक लीडर पे बैठ करता हूँ उस पर्टिकुलर सेक्टर में. तो अब जैसे जिस फेज में हम लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स वेयर जैसे आपने बोला कि डिफेंस भी है, रेलवेज भी है. तो आपके पास मेरा अजम्पशन है कि 6-7-8 कंपनियां एक टाइम पे होती होंगी. तो आप मतलब जनरली 6-7-8 कंपनियों में ही इन्वेस्टेड रहते हैं या आपका बहुत बड़ा गैमेट है या आप छोटा पोर्शन सब में डाल देते हैं, कैसे आपका मैनेज करते हैं? मेरे पास कंपनी 500 है. अच्छा. टू बी वेरी फ्रैंक, व्हाई आई बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला था कि आई एम फाउंड ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स. तो आपके एनुअल रिपोर्ट के लिए वो मेरा एनुअल रिपोर्ट के लिए मेरे पास एक अकाउंट है, मेरा प्रभुदास लीलाधर मेरा ब्रोकर है. ओके. तो उसको 600 रुपया महीने का दे देता है. तो व्हाट आई हैव डन, मैंने पूरा सब मार्केट मिड कैप का एक स्टॉक लेकर रखा है. राइट. सो दैट आई कैन गेट एनुअल रिपोर्ट. राइट. और उधर मैंने मेरा ईमेल आईडी नहीं दिया है. अच्छा. तो आई गेट फिजिकल एनुअल रिपोर्ट आ जाता है. तो दैट इज द ओनली वे वेयर आई कैन गेट अ फिजिकल एनुअल रिपोर्ट. और कभी कभी नहीं आता है तो मैं उचित को बोलता हूँ, भैया तू उसको मेल कर कि मेरा पोर्टफोलियो ये है, मुझे एनुअल रिपोर्ट भेजे. तो 4 बार उसको मेल करेगा तो आ जाता है एनुअल रिपोर्ट. तो मैं एनुअल रिपोर्ट इज जस्ट ए बाइबल फॉर मी. राइट. उससे गीता से ऊपर ज्यादा कोई नहीं है, वैसा ही है मेरा. एक बार एनुअल रिपोर्ट तो मतलब दो चीजें, एनुअल रिपोर्ट या आप फिजिकल पढ़ सकते हैं और यू गो फॉर ए कंप्यूटर. राइट. और मुझे इधर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. डेट इज फॉर उचित टू सी. वो मुझे बोलते हैं पापा आप क्यों इतना पीछे पड़े, इधर इस पे साइड पे ये है. वो बोला तू देख, मुझे जो फिजिकल एनुअल रिपोर्ट आता है उससे जो मुझे जो अंदर से एक फील आती है. राइट. तो मुझे अंडर राइटिंग करने का कोई कॉर्नरिंग करने का हैबिट है वैसा, तो उसमें एक फिल्म आता है. राइट. मैं ऑल ट्रेडिशनल वाला हूँ तो आई विल स्टिक टू सी. राइट. पुनीत भाई, हर एक आदमी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है. यू मस्ट हैव सम स्ट्रेंथ, यू मस्ट हैव वीकनेस. राइट. तो ओनली सक्सेस फॉर्मूला इज यू हैव टू एनकैश योर स्ट्रेंथ. आपका स्ट्रेंथ क्या है? मेरा स्ट्रेंथ है कि I to identify some low level stocks, कोई unidentified stock, unidentified segment. तो I will explore my strength. उधर ही मैं लगाएगा दिमाग अपना. मेरा वीकनेस है कि मैं ऊंचे में नहीं निकल सकता हूँ, तो I will leave it to other person कि वो आप डिसीजन ले लो चलो. मगर my stock picking is my strength. तो I will always see कि I will encash my strength. किसी का वीकनेस रहता है कुछ, तो वो उस पर नहीं जाने का. You should concentrate more on your strength. अभी नरेश जी है फॉर एग्जाम्पल, इज ए टेक्निकल गाय. अच्छा, मैं कभी टेक्निकल देखता नहीं है, मुझे आता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं. बहुत कोशिश भी बहुत बार किया है कि टेक्निकल समझना चाहिए, ये करना चाहिए, मगर somehow मुझे कभी वो इट हैज नॉट टच मी. बाय हार्ट इट हैज नेवर टच मी. पर उसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है. अगर नरेश भाई उसका टेक्निकल एनालिसिस, उसका स्ट्रेंथ है, साथ में फंडामेंटल स्ट्रेंथ अगर मिला ले तो नथिंग लाइक इट, ही कैन बी द मोस्ट सक्सेसफुल मैन. मगर अभी उसका फंडामेंटल एनालिसिस में शायद उसका वीकनेस हो सकता है. तो देयर क्लैशेस कम्स. टेक्निकल चार्ट बताता है कि ये ले लेना चाहिए, ये बेच देना चाहिए, मगर फंडामेंटली उसका अलग होता है.
तो जो टेक्निकल और फंडामेंटल का अगर कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं तो मेरा टेक्निकल का क्या है कि मुझे एक जनरल देखना चाहिए कि भाई व्हाट इज द जनरल ट्रेंड इन द मार्केट, बिकॉज टेक्निकल इज ए broader way of general what people are thinking about these stocks. जो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, then we have to make our own judgment कि अब इसमें जाना है कि नहीं जाना है. दिव्य, आप कभी कैश में जाते हैं या पूरा टाइम इन्वेस्टेड रहते हैं फुल्ली? केस में रहता हूँ मगर बहुत कम. See, my thinking is कि instead of going into cash, see, मेरा क्या है कि इक्विटी मेरा पैशन है एकदम. तो I will try to find out some stocks which has got a limited scope of going down. So that is my form of cash. एकदम अननोन कोई ले लेगा, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई जिसका कोई पूछने वाला नहीं होएगा, कुछ होएगा तो वो लेके बैठ जाएगा आराम से. साल में 10% बढ़े, 15% बढ़े, जो भी हुए. अच्छा. See, I will explain you why I entered Ricoh. Very interesting story. This is interesting. I've heard it before, so I think you should hear it. Right. I had a Ricoh 15 years back also. अच्छा. Ricoh was completely duplicator company like Xerox. Right. उसके पास 3 मॉडल था. Right. और Ricoh का किधर भी बॉम्बे में देखो तो कोई भी शॉपकीपर के पास Ricoh का मशीन नहीं रहता था. Right. बराबर है. Xerox रहता था या तो कैनन रहता था. Right. तो उस टाइम मैंने Ricoh का AGM में भी गया था, बॉम्बे में ही रहता था. वो नॉर्मल कंपनी था, जापानीज कंपनी था, मगर कुछ नहीं करता था इधर. नो अटेंडेंस ऑफ जापानीज पीपल टुवर्ड्स इंडिया. साइलेंट प्लेयर था. वो 30 रुपया नीचे में 25-30 रुपया का स्टॉक, ऊपर में जाकर 75-80 हो जाता था. बाद में पीछे से वो 10-15-20 साल ऐसा ही रहा होगा. आप चार्ट देख लेना. अभी मेरे को 2016 तो आई थिंक 2011 या तो 12 में what happened, I read one article where at that time Ricoh's turnover was 250 crore. Indian Ricoh. And they came out with a statement that Ricoh will be a 1,000 crore company in next 3 years. Okay. 4 times in next 3 years. So it catch my eye. Okay. बोला ये बताला सही है 1,000 करोड़. मैंने उस टाइम मैंने कुछ नहीं किया. देन आई वेरीफाइड विद द Ricoh ग्लोबल का उसका वेबसाइट से. बाद में उसका उधर का भी जापानीज पीपल का भी CEO का भी स्टेटमेंट आया नेक्स्ट Ricoh इंडिया के लिए. Ricoh इंडिया के लिए. Okay. और मैं जापानीज कंपनी का मेरा फेवरेबल सेगमेंट था पहले से. और मुझे एक चीज दिमाग में 5 साल से थी कि जापानीज पीपल आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन इंडिया नाउ स्टार्टेड. Right. So this was just like a first spark कि ये साला बोल रहा है. Right. Because I made heavy investment in Panasonic group में मैंने पूरा किया था. तो Panasonic AVC करके था जापानी मात्सुशिता टीवी. उसका नाम Panasonic AVC हो गया, डीलिस्टिंग हो गया. देन Panasonic बैटरी में किया है, Panasonic कार्बन में किया है. मेरे Ricoh का ये आया तो मैं बोला ठीक है. देन दे स्टार्टेड के भाई मैं ये प्रोडक्ट लाता हूँ, ये प्रोडक्ट लाता हूँ. टर्नओवर कहाँ से आएगा? विदाउट प्रोडक्ट यू विल नॉट नेवर गेट. बट साइमल्टेनियसली द स्टेटमेंट स्टार्टेड कमिंग कि हम ये ला रहा है, ये ला रहा है, ये ला रहा है. बाद में मैं एक कैलकुलेटेड जजमेंट लिया कि ये 1000 करोड़ की बात करते हैं. मैं बोला ये 700-800 करोड़ भी हो जाएगा तो भी कोई बुरा नहीं है. 35 रुपीज का भाव है. मैं बोला ये वर्स्ट टाइम में भी 20-25 रुपया गया था. बराबर है. और अच्छा टाइम में 75 गया था. तो मैं एक्सपेक्टेशन सोच के अगर 35 में आप लेते हैं तो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो नीचे में 25-30 तो हो ही जाएगा. 5 रुपये का रिस्क है. और ऊपर जाके 75-80 रुपये 100 रुपया ऐसा भी हो जाएगा. तो मैं आई स्टार्टेड धीरे धीरे लेना चालू कर दिया. बाद में उसका एक एक स्टेटमेंट आते गया. और उसका जो बड़ा स्टेटमेंट था कि दे आर गोइंग इन डॉक्यूमेंट मैनेज सर्विसेज में. एट दैट टाइम इट वाज वेरी बिग थिंग. मुझे कुछ मालूम नहीं था. मैंने इसके काम पे लगा दिया. मैं बोला डॉक्यूमेंट मैनेज सर्विसेज क्या है तू देख कंप्यूटर में, यूट्यूब में सब जाके देख. तो वो बोलता है पापा ये तो बहुत बड़ा पोटेंशियलिटी है. तो दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ऑल फिजिकल पेपर्स इनटू डिजिटल पेपर्स. देन वी कैन विजुअलाइज कि ये पोटेंशियलिटी तो साला बहुत बड़ा हो सकता है. और व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग व्हिच टच मी अबाउट Ricoh वाज कि इट इज द मोस्ट एथिकल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड. Ricoh is getting an award year after year. Right. Today was the 7th year.
sixth year where they are getting Corporate governance. award of the most ethical company of the world. Okay. See, I give most importance to the word ethical. Right. You can be the largest profit making, largest sales, largest revenue, largest employee, largest best place. But when word ethical comes, it is very rare. So Ricoh Global was the most ethical company. Right. And second thing, okay, this is the only listed company after Japan. Nowhere in the India, nowhere in the world, Ricoh is listed. अच्छा. तो मैं बोला अभी दिवेश भाई इस पे एक बार अपन इन्वेस्टमेंट करके आराम से बैठ जाता है. लेट मी ग्रो विथ द ग्रोथ ऑफ रिको. आई वांट टू ग्रो विथ रिको. इफ रिको ग्रोज आई विल ग्रो. And you kept on buying, or या एक बारी में you bought all the shares? नहीं धीरे धीरे करके 6 महीने में मैंने शेयर ले लिया पूरा. Okay. And at cost it was how much of your total money? इट वाज अबाउट 45 to 50 रुपीस में लिया मैंने पूरा सब. No. How much of your total portfolio you put into Ricoh after you completed your position? मैंने उस टाइम तो मेरे ख्याल से इट मस्ट बी अबाउट 10%. 10%. बिकॉज प्राइस वाज वेरी लो. Right. और 50% लेने जाते तो स्टॉक ही हिल जाता और भी ज्यादा. तो मैंने अभी मेरे पास अभी इट इज इन पब्लिक डोमेन. आई एम हाँ. होल्डिंग 3 lakhs रिको. Now it is there in the shareholding pattern. शेयर होल्डर टॉप 10 शेयर होल्डर का नाम आ जाता है, उसमें मेरा नाम आ गया है. Right. तो एवरीबॉडी नोस मी कि दिवेश भाई आपके पास इतना रिको है. तो नोबडी यूज्ड टू नो मी. Right. तो मगर उसमें एक बार डीलिस्टिंग हुआ, वो फेल हो गया. उधर पैनिक हो गया. सेकंड डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो गया. देन जापानीज पीपल रिजेक्टेड द प्राइस. वी ऑल टेंडर एट अराउंड 225. मगर उस टाइम में मेरा जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल था सबको मैं बोलता था कि साला अपना हार्ड लक है कि रिको डीलिस्टिंग कर रहा है. So I remember his words somewhere in the first delisting जब होने वाला था. Like delist हुआ तो मेरा पूरा मेहनत waste. It would be a waste of my efforts. हाँ. क्योंकि आई वाज प्लेइंग ऑन द रिको's फ्यूचर. और वो डीलिस्टिंग कर रहा है. तो बीइंग अ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. So I exactly remember ये delisting fail होएगा, the stock will fall 50%. That is the time you buy. हाँ. You bought more after delisting failure also. You had a position completely. नहीं, आई हैड अ पोजीशन एट Had a position. नहीं that is what he told people Yeah, yeah. कि ये भाव पे मत लो, Good point. fail होगा तो buy and it failed the first time. And I prayed कि it should fail. So that is how. Because I was holding. Right. Right. मैं बोला अभी तो क्या है कि वो अगर उस टाइम फर्स्ट डीलिस्टिंग अगर सक्सेसफुल होता था तो Right. इट वुड बी अराउंड 75 to 80 रुपीस के आजू बाजू अपना माल चला जाता. तो आई प्रेड कि इट शुड फेल. अरे इट फेल. सेकंड टाइम उसके बाद में एक साल के बाद वापस हुआ तो एट दैट टाइम वी कोटेड अराउंड 225 रुपीस. सब लोग बोला कि अभी दे दो, अभी क्या कि दूसरा कुछ ढूंढेगा अभी. बोला चलो अभी तो उसको डीलिस्टिंग करना ही है तो अभी दे दो. देन पीपल स्टार्ट टेलिंग स्टोरी कि वो दूसरा कंपनी बना लेगा तो ये कंपनी में क्या करेगा ये वो. मैं बोला ऐसा नहीं होने वाला है. एथिकल कंपनी है. ऐसा अपना वैसे भी ये कंपनी में 75% तो जापानीज ओन है ही. तो जापानीज पीपल 75%. और अभी जो रिजल्ट्स नहीं आया उसका व्हाट इज द व्यू? वो एक अलग थे. रिजल्ट नहीं आया. वो टेक्निकल एक इश्यू बन गया है उन लोगों के बीच में, ऑडिटर्स और मैनेजमेंट के बीच में. Okay. एंड इट हैज गॉन आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट हो गया है. हाँ. और मैं भी अभी मुझे तो अभी ये लगता है कि रिको का बेस्ट ऑफ रिको इज येट टू कम. Wow. उसका जो हाँ? Yeah, that is why I was asking. Ricoh- क्योंकि Ricoh का for जो भी example अभी अभी वो Z group भी हो गया, so that is where you'll get the best opportunity. Ricoh Because का I जो missed अभी- out in 2012 hearing all Ricoh का his. अभी जो उसका जो बिजनेस पोटेंशियलिटी है. Right. And I In think fact, I will tell you that I am more bullish about Ricoh at 500 than I was at 50 rupees. Wow. I am more bullish. Okay. and globally in मेरे ख्याल से in their announcements globally they have said results are good in India almost. अभी तो annual reports और newspapers और क्या पढ़ते हैं आप? Books वगैरह, any books you read or बुक्स your books are your annual reports only? ऐसी एक चीज. आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल है. आई वांट टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी. Right. It can be. It is see, stock picking is a learning process throughout the Throughout life. life, right. You are never a master. Right. You are always a student in stock market. Right. As the day you feel that you have become the master, Right. it is your top. Right. all time top. It is all time top, lifetime top. Right. So I am always a student, sir. Right.
और मुझे यही लगता है कि मुझे जो मेरा जो नॉलेज है इट इज जस्ट वेरी पीनट्स, जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग. सो आई ऑलवेज ट्राई टू सी नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सक्सेस मिले नहीं मिले, जैसा मेरा अभी मेरा लक अच्छा चल रहा है तो आई मेड इनफ वेल्थ. अभी कल शायद नहीं भी हुए, मगर नॉलेज इज ऑलवेज विथ मी. So what is most important is knowledge. Like this has been the only interaction with Divyesh bhai where there has been less entertainment. Otherwise, moment he starts in our seminar, there is an entertainment shuru kiya jaya. So he is one of the guys who has some of the most interesting humor. And मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पब्लिकली वैसे बात नहीं करते हैं. ये मीडिया ने पूरा खेल गलत कर दिया है. मीडिया तो if you want to make money in stock market, don't keep one eye on media. Or if you want to keep one eye on media, don't hear the media. Use your brain. मीडिया में जो बोलने वाला है उसको टीआरपी का पैसा मिलता है. वो जो बोलता है बोलने दो, मगर यू रीड इन बिटवीन द लाइन. सब मिनिस्टर का मैं आज तक इतना देखो बाजार में तेजी आवे मंदी आवे अपने से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने हिसाब से आने वाली है. नॉट बिकॉज दिवेश भाई इज टेलिंग और पुनीत इज टेलिंग और टेक्निकली न्यूरेज इज टेलिंग. अगर आना होएगा तो आ जाएगी. मगर वन थिंग इज वेरी सर्टन, लास्ट फ्रॉम 1 year वी हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी टॉप लेवल करप्शन. See, that is absolutely take away of this government. कि जो अपनी इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था करप्शन का, जो भी प्रॉब्लम बोलो वो करप्शन से सॉल्व होता था. इवन यू कैन बाय सुप्रीम कोर्ट जज, यू कैन बाय पुलिस इंस्पेक्टर, यू कैन बाय एनीथिंग विद द मनी. एटलीस्ट करप्शन at the top level is vanished. You cannot have a corruption of more than 500 crore anywhere in India now. We have never heard in last 1.5 years after moving. That is 101%. And slowly all ministers are showing their performance. आज आप पावर में आप देखो, जब ये गवर्नमेंट 2 साल पहले मुझे पावर सीनरी मालूम था, तमिलनाडु में साला 7-7 रुपया 8 रुपये यूनिट पे पावर नहीं मिल रहा था. आज प्रॉब्लम आज ये आ जाएगा कि पावर विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आफ्टर 2 years. इट विल बी पावर सरप्लस, एक्सेस पावर. इंडिया पावर प्रॉब्लम इंडिया में परमानेंट रहने वाला था. पहले शॉर्टेज प्रॉब्लम था, नाउ इंडिया विल बी पावर सरप्लस कंट्री. नहीं अभी मेरे ख्याल से एक्सचेंज उसका जो पावर एक्सचेंज पे 2 या 3 रुपए, पावर एक्सचेंज में 1 रुपये पे पावर नहीं 2 मिलता रुपए. तो व्हाट इज दिस? वी नेवर हर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग. अभी एक्सेस पावर एंड मे बी इट हैज अभी इट न्यू लो. कोल का ले लो तो पीयूष गोयल बोलते हैं कि साला कोल वाला ऑप्शन लेने में तैयार नहीं है. इंडिया विल हैव टू शट डाउन द माइंस. ये पोजीशन आ गया है. और प्रीवियसली वी वर गोइंग टू इंपोर्ट कोल, थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ कोल्स. आज एनर्जी कॉस्ट अपना कितना कम हो रहा है, तो वो किधर जाने वाला है? वी हैव नेवर टेस्टेड द फ्रूट ऑफ लो एनर्जी, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी. वो भी आ रहा है. So we as our age people, we have a good future. So I personally feel कि जो अभी तक जो अपन देखा था ना, it is just a peanuts. The real India का तेजी तो मुझे it is not yet started. So the last 20 years were trailer. Now the movie is started. No. Next 10 years will be a big change. Big so change. the big lesson for the listeners is that be as much invested as possible in equity markets. 100% इक्विटी में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. सबसे पहले तो दिमाग से डाउट निकाल देना चाहिए. मैंने उसका लास्ट टाइम स्टार्टिंग मैंने यही बोला था. आई थिंक यू शुड रिपीट दैट जोक, तो बहुत मजा आएगा. द स्टार्टिंग जो उधर उन्होंने किया था, मैंने ये किया था कि सी आई हैव मेड बेस्ट वे टू एंड. आई हैव मेड इनफ मनी. बराबर है. Right. आई एम एज ऑफ 58. Right. सो और मुझे ये वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट का मुझे नहीं चाहिए अभी. नाउ आई हैव ए दैट मच मनी व्हिच आई कैन नॉट एंजॉय थ्रू आउट माय लाइफ. वन थिंग इज वेरी सर्टेन. बराबर है. तो मुझे अभी इक्विटी में नहीं जाना है. सी आई हैव मेड अ डिसीजन इन माय माइंड. आई डोंट वांट टू गो टू इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट. आई डोंट वांट वॉलेटिलिटी. आई वांट पीस ऑफ माइंड. Right. Okay. That is my status of my life today. Okay. So now what I will do? Suppose I don't want to go in. मतलब I have decided I am not going in equity or mutual fund or HDFC mutual fund, Reliance Capital किधर भी नहीं जाना है. Any equity related derivative कोई product मुझे equity का नाम नहीं चाहिए. Out of fear. Because I don't want any volatility. Okay. Now what are the options left for me?
देखो मैं कुछ भगवान का नाम तो लेगा ही आराम से, साथ में पैसा भी पड़ा है मेरे पास, तो वेयर आई विल यूज माई मनी। तो आप जैसा सब इंटेलिजेंट फ्रेंड्स है, तो वो एक ने बोला टैक्स फ्री बॉन्ड में, कुछ ने बोला टैक्स फ्री बॉन्ड में लगा तो 7.5% टैक्स फ्री बॉन्ड मिलेगा। इसने बोला, नूरेश ने बोला 8% में एफडी में कर लो, किसी ने बोला लिक्विड फंड में डाल दो, यू विल गेट 8.5%। 7.5% टैक्स फ्री बॉन्ड ले लिया, उसमें आपको टैक्स उसमें ऐड कर डालो तो 3% आपका टैक्स चला गया, तो इट विल कम डाउन टू 10%। बराबर है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, तो सब मिला के 10 की जगह 11% मिलेगा। सो स्टोरी विल एंड एट 10 to 11%। इधर भी आपका इन्वेस्टमेंट लीव असाइड इक्विटी पार्ट, गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करने का है, रियलिटी में इन्वेस्ट नहीं करने का है, वो तो अपना कॉमन सेंस बोलते हैं कि रियलिटी एट इज पीक। गोल्ड में भी कुछ दम नहीं है, कुछ ज्यादा है, जो चलता है गोल्ड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो अगर मेरे पास अगर आज की तारीख में 10 करोड़ रुपया है, तो वेयर शुड आई इन्वेस्ट? टैक्स फ्री बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड फंड, उधर व्हाट इज माय रिटर्न? 10 to 11%। दो चीज क्लियर हो गया, इक्विटी में नहीं डालने का है और इधर मेरा रिटर्न 11% हो गया। नाउ थर्ड सिनेरियो, अगर 11% इधर इक्विटी इधर रिटर्न है, तो इक्विटी चाहे कितना ऊपर जावे नीचे जावे, इधर से इसके ज्यादा रिटर्न मिलने वाला ही है। इक्विटी विल गिव यू मी मोर रिटर्न देन 11% if I fail also. So why not invest in equity? So equity is the best investment. चीज एक ही है कि सी our style of investment or our method of investment is wrong. अपने को इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना है तो आई से गॉड विल हेल्प यू। अगर आपको इन्फोसिस में करना है, कल उठ के इन्फोसिस में कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू वेरी स्ट्रगलिंग फेज, एकदम खराब स्टेज में, तभी नूरे आपको भी मालूम नहीं है, मैं एक एलकेपी का फंक्शन में गया था, उसका एक हेड ऑफ द रिसर्च है, वो उसका पूरा लेक्चर सुनने के बाद मैंने उसको एक रिपोर्ट दिया था मेरा। मैं बोला मैंने क्या किया था उस टाइम, अपन मोस्ट फेलियर आदमी था, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट ऐसा, मेरा एक फुल स्केप पेज के ऊपर मैंने एक जगह इन्फोसिस का मार्केट कैप लिखा, इन्फोसिस इज 1 लाख करोड़ सपोज, कि उसका जो भाव था वो भाव लिखा। और आई हैड ए सेकंड थॉट कि सपोज आई एम नॉट बाइंग इन्फोसिस, what are the other stocks which I can buy out of that money? So at that time whole India was after software IT, and I thought otherwise कि आप कैपिटल गुड्स में आप ये रिफाइनरी ले सकते हैं, या सेल ले सकते हैं, या टिस्को ले सकते हैं, these are all hardcore economy stocks. और end of the day, instead of one Infosys you can buy 16 to 17 top of the top company like Tata Motor, like top cement company, like top refinery, ऐसा सब कुछ ले सकता है। बराबर है। और बाद में मैंने नीचे एक कैप्शन लिखा था, सपोज इन्फोसिस आज नारायण मूर्ति बोले कि इन्फोसिस आई एम क्लोजिंग डाउन इन्फोसिस, व्हाट विल हैपन टू इंडिया? व्हेन इन्फोसिस वाज एट इट्स पीक, नारायण मूर्ति उसके साथ में था, तभी मैंने ये सोचा था क्या कंपनी का वैल्यू कैसे गिना जाए, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी। वैल्यू ऑफ द कंपनी इज जज बाय व्हेन कंपनी डजंट एग्जिस्ट, उसके बाद व्हाट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इन्फोसिस। सपोज इन्फोसिस बंद हो गया, टेक इट फॉर हाइपोथेटिकली थिंक, इन्फोसिस बंद हो गया, क्लोज डाउन, क्या होगा? अभी बहुत कुछ हो सकता है। तभी अभी की बात भी चलो, अभी भी चलो बात वही सेम सिचुएशन है। इन्फोसिस बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट, 1 लाख पीपल 2 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, दे विल एब्सॉर्ब बाय समबडी एल्स। यू एंड आई आर नॉट इफेक्टेड। इन्फोसिस ये ग्लास नहीं बनाता है, इन्फोसिस ये लैपटॉप नहीं बनाता है, इन्फोसिस आपका खाना नहीं बनाता है, इन्फोसिस आपका कपड़ा नहीं बनाता है। आपको क्या चाहिए? खाना पीना, रहना देना, वो ये नहीं। इंडिया इज नॉट इफेक्टेड बाय इन्फोसिस। बंद हो गया। मगर ये जो मैंने 15 कंपनी लिखा है, मेरे आर्गुमेंट वही किया था कि इसमें से अगर एक कंपनी बंद हो जाए, ये रिफाइनरी बंद कर दो चल, मैं बोला दूसरे दिन इंडिया के अंदर हल्ला मच जाएगा कि पेट्रोल नहीं मिलता है। ये स्टील प्लांट बंद कर दो स्टील का, तो हल्ला मच जाएगा कि ये स्टील नहीं मिलता है। मैं बोला दीज आर ऑल द एसेंशियल थिंग ऑफ द लाइफ, सो हु हैज गॉट मोर वैल्यू? मगर उस टाइम अपना सुनने वाला कोई नहीं था। दैट वाज द राइट टाइम, दैट वाज द पीक ऑफ इन्फोसिस।
तो वो जो एलकेपी का हेड है ना नूरेश जी, मैं अभी सच्ची बात बोलता हूँ, वो अभी एलकेपी छोड़ के गया है। मगर इतने साल से वो मुझे उस पॉइंट के ऊपर आज भी मुझे हर दिवाली पे मुझे गिफ्ट भेज रहा है। और मुझे इधर आके अभी उसको एक फ्रेंड मिल गया, वो इज ए वेरी हाई नेटवर्क, 200 मोर देन 200 बिलियन डॉलर्स का, उसके पास 1000 करोड़ का फंड है। तो उसने उसको पिकअप कर लिया कि तू मेरा फंड संभाल। और अभी उसका ड्यूटी मेरा अभी 15 दिन पहले उससे 1 घंटा बाद चला। उसका अभी ड्यूटी क्या है कि ही वांट टू जस्ट प्रिजर्व हिज कैपिटल, दैट इज व्हाई ही इज रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड। वो बोलते हैं कि मेरा जो फंड है $200 मिलियन, दैट शुड रिमेन $200 मिलियन आफ्टर 1 ईयर इन डॉलर टर्म्स। कैसा भी करके आप मेहनत करो। तो 6 महीना सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, लंदन डेट फंड में डालेगा, उधर डालेगा, 1% मिला, 2% मिला, 3% मिला। वो बोलता है कि वी आर स्ट्रगलिंग टू प्रिजर्व अवर कैपिटल एंड आई एम हेफ्टीली पेड। He must have been paid minimum 1 CR per year. I am heftily paid only to keep my just preserve my capital. Fact is, this is the fact of the life, and this is the opportunity for people like us in India. अरे कैश स्टोर करने का भी तो 1% लग जाता है साल भर का खर्चा। इफ यू हैव टू स्टोर, उसको मैंने जब ये इन्फोसिस का, वो आज भी मुझे याद करते हैं दिवेश भाई, आपने जो इन्फोसिस का बात बोला था तभी इन्फोसिस रियली आफ्टर 6 months इट बिकम द टॉप बोला था। वो मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम कोई ऐसा नहीं था। और उस टाइम पुनीत जी, मैं एग्जैगरेट नहीं करता हूँ, मगर टू स्पीक कि इन्फोसिस बेचो, मतलब इट इज ए क्राइम, इट इज ए पकड़ के मारेंगे कि इन्फोसिस स्पीक, राइट। मगर आई हैड मेरा एक माइंड में एक ही है कि जो आई डोंट फॉलो द क्राउड, आई डोंट फॉलो द क्राउड। नहीं तो 6-8 महीने पहले, साल भर पहले अपना पुणे मीट हुआ था। तो सब लोग प्राइवेट बैंक्स आर द सेंट्स ऑफ, अभी प्राइवेट बैंक में भी लोच आएगा, पीएसयू तो मर जाएगा। तब से 30% तो प्राइवेट बैंक ने बोला था ना, पीएसयू बैंक खत्म हो जाएगा। उस टाइम तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना होएगा। नहीं, मेरा थोड़ा बुलिश व्यू था तभी शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ। वो तो अच्छा है कि टेक्निकल व्यू था, स्टॉप लॉस हिट एग्जिट। आप बिलीव नहीं करेगा, मेरे पास इधर नहीं, मेरा घर में हमारे क्या है कि माय सक्सेस क्या है, घाटकोपर में हम लोग लाइक माइंडेड, देयर आर 18-20 फ्रेंड्स। जो आपका वो हमारा जीआईजी ग्रुप घाटकोपर में, घाटकोपर इन्वेस्टर्स ग्रुप ऐसा है। अच्छा। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी मीट एट वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऑफिस, ही हैज अ लार्ज ऑफिस 1000 स्क्वायर फीट। तो उसका ऑफिस में पूरा हॉल जैसा है, तो वी हैड अ राउंड टेबल वैसा ही पूरा रहता है, ऐसा चेयर रहता और एवरीबॉडी सिट्स, एवरीबॉडी हैज अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, राइट। तो मैंने अप्रैल 2012 में उधर एक फुल स्केप दिया था, मैंने जेरोक्स निकाल कर सबको 20 फ्रेंड्स को, कि मोस्ट डेंजरस कंपनीज ऑफ इंडिया, मोस्ट 2012 अप्रैल में भी मेरे पास है वो। उसमें मैंने 50 कंपनी का नाम यही लिखा था, जीवीडी, विच इज अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ है। आउट ऑफ 50, 49 है ऑलमोस्ट वेनिश, पूरा जीरो हो गया। ओनली आई एम फेलिंग इन डब्ल्यू फॉर टाइम बीइंग, फॉर टाइम बीइंग। रुपए का भाव। दिवेश भाई, मेरे को एक तो अब आप मेरे से एक और चीज है, एक रिक्वेस्ट ये है कि 2002 असेसमेंट मेरा कंपटीशन ऑफ इनकम, हु आई वाज एट 2002, एट दैट टाइम मेरा सब टोटल एसेट्स वाज 10,85,000। उसमें मेरा फ्लैट आ गया, मेरा पीपीएफ अकाउंट आ गया, मेरा बैंक बैलेंस आ गया, मेरा वैल्यूज ऑफ शेयर्स 4-4.5 लाख रुपए का था, सब मिला के 10 लाख रुपया मेरा 2002 में था। और अभी आज जो हूँ, इट इज आई थिंक एटलीस्ट 100 टाइम्स फ्रॉम 2002 टू कैन बी मच मोर, एटलीस्ट अभी कोई मेरा रिको का भी वैल्यूएशन वही ना, तो वो ही उससे ज्यादा है। तो आप मगर मैं अभी वो नहीं गिनता हूँ, करंट मार्केट प्राइस पे नहीं गिन रहे आप, करंट मार्केट प्राइस नहीं गिनने का है अपने को। मगर
दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। नहीं, दिस इज यही देख के तो इंस्पिरेशन मिलता है ना कि बाजार में रहो, यू विल I गेट am- योर ओन I am- साइकिल I कभी am- ना कभी। I am 100% कॉन्फिडेंट कि ये जो लास्ट 10-12 साल में हुआ है उससे मच 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 ऑन लार्जर स्केल नेक्स्ट 10-20 इयर्स में हो सकता है। ये हम लोग को भी तो वो चाहिए ना, ये हमारे एज के लिए। यू हैव टू पिक अप द राइट स्टॉक्स। राइट। राइट स्टॉक्स कैसे मिलेगा? यू हैव टू पिक अप ए राइट सेगमेंट। राइट सेगमेंट कैसे मिलेगा? दो सेगमेंट विच आर नॉट इन फ्लेवर, राइट। उधर से ही आपको मिलेगा Right. हिडन जेम्स को। बाकी आपको परसेंटेज एप्रिसिएशन मिलेगा। आज के तारीख में अभी आप बोलेंगे कि इतना इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में होने वाला है। मैं बोलता हूँ आज के तारीख में इंडिया में इज देयर एनी इंडियन कंपनी विच इज कैपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग 1000 करोड़? Do you find any company which can invest 1000 crore in Of their own money. Of their own money out of their balance sheet? I don't find any company such companies. अच्छा, तो उसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ग्रो नहीं करेगा? वो भी नहीं रहेगा, कोई ना कोई और आएगा ही आएगा। लेट अस अपन आर्गुमेंट करते हैं ना एक बार, राइट। फेयर आर्गुमेंट करते हैं। राइट। I have every right to be wrong, you have every right to be right or wrong. इंडिया में कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि जो 1000 करोड़ में इन्वेस्टमेंट करने के लायक है, तो इंडिया ग्रो नहीं होएगा। मैं बोलता हूँ इंडिया 100 टाइम्स ग्रो होएगा। तो देयर आर समबडी हु विल ग्रो इंडिया, हु आर देयर, दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज। अभी मनी विल कम अभी आप देख लो, आप मेरा एक ऑब्जर्वेशन देख लो, यू गो टू एनी मैगजीन्स, आप पेपर में पढ़ लेना। अभी मेरा आप कहने के बाद में भी आप देखेगा, you will find the advertisement of all unlisted multinational company का एड आएगा, तोशिबा का एड आएगा, एनईसी का एड आएगा, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकल का एड आएगा। एवरी बोल ये वो क्या, what they signifies? Are they fool to give advertisement here? They see huge future. ब्रांड इधर बनाया जा रहा है सब कंपनीज का, वही होने वाला है। इवन इफ दे डोंट हैव अ प्रेजेंस, ब्रांड बनाया जा रहा है। They are future of brand. बिजनेस यहीं पे है। नहीं, बट ब्रांड बनाया जा रहा है। जैसे ही बिजनेस लॉन्च होगा तो अभी They're इंडिया getting में ready. हाँ। अपने को क्या करने का है? We have a liberty to only invest. जैसे रिको इंडिया का मुझे याद है 4 साल पहले जब मैं जाता था You and I फ्लाइट्स में, cannot invest in Japanese equity, in American equity. अभी अपने पास तो एक चीज वेरी क्लियर है, थॉट प्रोसेस इज वेरी क्लियर कट। वी हैव टू इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटीज। अच्छा, इंडियन इक्विटीज में 5000 कंपनी है, उसमें से व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो मैंने ये उस लेक्चर में वही बोला था कि व्हाट टू डू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू। व्हाट आउट ऑफ माय एफर्ट्स ऑफ 100 यूनिट्स आई गिव 80% एफर्ट्स ऑफ व्हाट नॉट टू डू, सो दैट माय 20% एफर्ट बिकम्स वेरी इजी। तो मैंने एक लिस्ट बना दिया है कि ये हाईली लेवरेज कंपनी में नहीं जाने का है, ये कंपनी में नहीं जाने का है, कमोडिटी में नहीं जाने का है, इसमें नहीं जाने का है, दोज हु आर द फ्लेवर ऑफ द लास्ट बुल रन उसमें नहीं करने का है अपने को, क्योंकि उसमें आपका पैसा डबल हो सकता है, उसमें आपका 10x 20x 100x नहीं होएगा। And whenever I enter in any stocks, my first target is whether it can be 10x from here, it can be 20x from here. If I get answer yes, it can be, then only I give my efforts. ये हो सकता है। और मेरा लाइफ में इतना बहुत सा स्टॉक, मैंने हनीवेल लिया था साहब 57 रुपीज में, ओनली 57 स्टार्ट में, एंड इट वाज टाटा हनीवेल। आज जाके क्या भाव है? मल्टीनेशनल कंपनी का पोटेंशियलिटी मुझे तो अभी लगता है कि टाइम हैज कम फॉर मल्टीनेशनल। या तो वही कंपनी जाके यहाँ की लोकल कंपनीज खरीद भी लेगी और उधर वैल्यूएशन करा देगी। वो ले लेगा ना, इधर वाले को इट इज अ विन विन पोजीशन फॉर ऑल मारवाड़ी प्रोमोटर। बोलता है मेरा सो अपन जो अच्छा कंपनी लेंगे तो शायद से वो कोई एमएनसी आके अच्छे भाव में ले ले, यू नेवर नो, मतलब मनी विल कम एंड चेज। बोले और अभी तो सेंटिमेंट्स भी अच्छे नहीं है, तो अच्छा टाइम है। गुड टाइम नहीं, अभी अच्छा है ना पीरियड, खराब पीरियड में ही मिलेगा आपको। मैक्सिमम वर्क यू शुड डू इन बैड टाइम। अच्छा टाइम में तो आराम करने का, सोचने का, लेट योर स्टॉक राइड्स, अपने को कुछ नहीं करने का, देखने का बस क्या करने का। मार्केट फॉलिंग पैनिक होएगा तभी काम करने का, तभी मजा आता है कि नहीं अभी नाउ यू आर गेटिंग ए ट्रू वैल्यूएशन मिलता है। मगर you should be die hard optimistic. Next, die hard optimistic. You should be die hard optimistic. हाँ, सपोज आप ये बोलेगा कि मुझे ये डाउट लगता है, तो प्लीज डोंट एंटर इन Do it. मनी, बिग मनी कांट बी मेड बाय। फर्स्ट थिंग इज यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो ये है कि मेरे को आपका वो देखना है जो आपके
इंडस्ट्रीज के ऊपर अपना बना के रखा है। चलो घर पे मेरा चलते बहुत हैं। इंटरेस्ट है घर पे चलो, लेट अस गो। क्योंकि ये भी बुक रीडर है और वो सब। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा ट्रेजर है। लेट अस गो टू माय हाउस, बाजू में ही है, पिन बिलिंग छोड़ के ही। चलो लेट अस गो, लेट अस। थैंक यू सो मच थैंक यू। Well, this was the amazing journey of Divyesh Bhai into stock markets. Well, after this meeting, we went to his home and saw his collection of articles. It was just fabulous. It was great talking to him, and I hope you enjoyed this podcast. Thanks a lot.